Then we have also planned sequence of things which are to be executed today. Very shortly, we are going to invite Dr. Lobson Tenzin Negi. He shall be delivering his topic online. Stranger. Two of our local dignitaries, renowned personalities who represent district North. One is Shri D.S. Goldar, retired judicial magistrate. Sir, we're glad to have you here. You're most welcome, sir. Another dignitary representing district North and blessing this occasion is Professor B.S. Negi, sir, retired professor. You are also welcome, sir.
compassion-based ethics at Emory University, Atlanta, USA. He was born in Kino. Dr. Neki is a former Tibetan Buddhist monk and a long-term contemplative investigator whose research has focused on the relationship between mental, emotional states and physical social well-being. Dr. Neki has been awarded several recognitions, including University's prestigious Thomas Jefferson Award in 2024. So we welcome you here, sir, and invite you to deliberate upon your topic, compassion-based education for a sustainable future, Himalayan wisdom, and the global impact of sea learning. You are most welcome, sir. Please continue with your deliberation. Good morning. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Please continue with the topic. Thank you, sir. Could you make me the co-host, please, so I can share the slides? Yes, you are already co-host. Am I? बोलो, you can show you. आप show करो बोलो उनको. बोलो बोलो सर उनको. Share करो बोलो slide. Begin the topic, sir. Can you make me the co-host? Yes, already co-host. I can share my. You are already co-host. Please begin with your topic. First slide is being shared on the screen. One participant can share it at a time. It says that one participant can share, then host only. Who can share? There is a question, and it says host only. Should I put all? It is done from our side, sir. We will continue. नहीं नहीं co-host बनाया उनको सर already. कोई बात नहीं आप लगाओ. व्हाट्सएप किया 2 मिनट वेट करो या तो यहाँ से करेंगे. ठीक है. Can you see my slides now? All set? Yeah, please. व्हाट्सएप में. Okay. Yes. Okay. नहीं नहीं सर हम co-host already बनाएंगे. That's good. That's good. You can see my slides, right? You can see it. Yeah. No, they should be able to see it. Excuse me, can you see my slides on the screen? करते हैं बोलो. वेट करो. कर स्लाइड्स यहाँ से कर दे. यहाँ से करते हैं. For the little moment, please. We are doing it. जब हम दीदी आएंगे ना तब वो विज्ञान की बेस्ट. कोई You may please
begin with your topic. Yes, can you see? I'm sharing the screen. Can you see my screen? You can hear me? Hello? Are you able to hear me? सर दिखाओ सर चलो नहीं तो थोड़ा ऊपर कैसा लगा उनको बोलो आप बोलो Sir, Robson, sir, kindly begin with your deliberations. Can you see my? अभी मंच पे आ रहे हैं बस थोड़ा सा इधर उधर I can't forward it either. ऊपर आना चाहिए हमने ऑलरेडी शेयर किया मैसेज Sir, we have already shared your slide on the screen. You please continue. Okay. Okay. So, respected dignitaries, distinguished scholars, esteemed organizers, and dear friends, it is a profound honor for me to join this three-day conference. I'm joining from Atlanta, but I'm originally from Kinnaur, so it's a real privilege for me to be able to participate in this conference. Could you move forward the slide, next slide? Let me begin by quoting His Holiness the Dalai Lama, where he says that though I am, of course, a Tibetan, I also consider myself to be, in a sense, a son of India. Since childhood, my mind has been nourished by the classics of Indian thought. From the age of 6, when I began my studies as a monk, the majority of the texts I read and memorized were by Indian Buddhist masters, many of whom were from the ancient University of Nalanda in central India. And since early childhood, or adulthood rather, my body too has been nourished by Indian fare, rice and dal. Next slide, please. So the reason I want to invoke His Holiness is because, as you can see, that His Holiness the Dalai Lama, he represents what the ancient Indian thought, really values, and those would be the basic human values. If you could forward the slide, please. Next slide. And the ancient Indian thought, that focuses on compassion, wisdom, many of the basic human values that are so necessary today. You see that this knowledge went to Tibet from India, and the Tibetans, including His Holiness the Dalai Lama, have studied these texts. And this very knowledge from Tibet actually was something that was permeated throughout the Himalayan belt, including Kinnaur, where the conference is being held. And in fact, two of the spiritual teachers of His Holiness the Dalai Lama, current Dalai Lama, were from Kinnaur, Negi Lama Tenzin Gyaltsen and Geshe Rinzin Tempa. Many of the classic texts that the Dalai Lama studied of those Indian origin that are translated in Tibetan were from these two great masters that came from the Himalayas, from Kinnaur. Next one, please. Next slide. And I want to focus on
what is the essence of like ancient Indian thought, ancient Indian knowledge. This is something that His Holiness Dalai Lama actually sees so important for our world today. In fact, in his writings, for example, in the book that he wrote at the turn of this millennium, Ethics for the New Millennium, in that he says that a revolution is called for, certainly, but not a political, an economic, or even a technical revolution. We have had enough experience of these during the past centuries to know that a purely external approach will not suffice. What I propose is a spiritual revolution. So what we see is that the Dalai Lama, in his over 4 or 5 decades of extensive traveling, meetings with scientists, experts from educational field, healthcare, and other fields, what he sees in today's world is what we need is the inner values, along with the external development, because too much of focus on external development and the neglect on the inner development is what is reflected in many of the problems that we are seeing. Increasing mental health crisis, global warming, for example, so much divide along the political kind of lines or other religious conflicts and so forth. So many of these reflect a certain neglect of what he calls these human values, or spiritual values. So he has made in his life 4 major commitments. And of these 4 commitments, as you can see on the screen, 2 of them relate to directly the ancient Indian knowledge that have been practiced in Tibet and the Himalayan belt for centuries. And the first one of these is promoting basic human values such as compassion, tolerance. And he sees that this part of this, in order to really promote that in the world, he sees that we need to create greater awareness and interest to the values of ancient Indian thought. So as he says that he's the son of India, because of his knowledge is informed by the ancient Indian knowledge, he sees himself in many ways as the ambassador of Indian thought, and that's what he has done, traveled extensively. And now, next slide, please. And he has written this down in books, many books, including Ethics for the New Millennium. And many scientists and experts in the educational field have actually taken his advice to see how we can bring that into education. For example, here at Emory University, which is in Atlanta, Georgia, we have developed a program called C-Learning, Social, Emotional, and Ethical Learning. And this is based on the writings of the Dalai Lama, but also the structure is based on the other education experts. For example, Dr. Daniel Goleman, Peter Senge, as they present in this triple focus, the structure. Next one, basically the C-Learning, as we, in India, this would be quite obvious actually. What it is that it is based on 3 kind of the basic components, or the 3 basic the dimensions. We call it awareness. This has to do with basically the gyan, or the prajna, the wisdom, the compassion, karuna, and the engagement, that is the shila, the ethic, the development. With the compassion and wisdom, if we can bring that into our education, in our lives, we can inform our actions, our decisions, our responses to the people. So the C-Learning has been a comprehensive curriculum, based on this ancient Indian knowledge, and it has been developed age appropriately. It has the framework, that is the companion in the companion book, and then from all the way through the preschool, the C-Learning play, and the elementary school, middle school, high school. This extensive curriculum is developed, and now it has been implemented in many countries, over 70 some countries now, and it was launched in
2019 in Delhi by His Holiness the Dalai Lama and others like the Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi and others were present. And today, this sea learning curriculum is in 70 some countries. As I said, that it has reached over 20 million students. India alone, it has reached over 100,000 schools. And the major effort in India has been carried by Piramal Foundation. This is a huge foundation in India, over 5,000 people working in the field in education, healthcare, and other sectors. And as you can see that, result of implementing the sea learning, the social, emotional, and ethical learning, based on this ancient Indian thought, in ancient knowledge, it's making a real impact in the lives of children, whole school culture. For example, recently they published their report by implementing sea learning in 110 schools to prove the proof of concept test to see how it works in Junjunu in Rajasthan. And from there, the study finds that as one of the principles of one of the schools says that every child deserves the opportunity to grow into a good, please forward one slide, and then I'll come back to this one. If you can go, yes. So in this study, in one of the principals reported sea learning intervention or the sea learning program, with our students is proving immensely beneficial. We have witnessed noticeable academic improvements ranging between 9 to 10%, especially in classes 7 and 10. Beyond academic scores, students are more confident, collaborative, and resilient. This program is not just shaping better learners, but also more compassionate individuals. This is something that our world needs today, that because not just the educating the mind, but the heart, that to make a person as a ethically sound, resilient, somebody who can interact, so that not only they are experiencing well-being, but also they can interact with others, promote that well-being. And then also their decisions, whether small or larger decisions they make, whether as a leader or just an individual, those decisions would be conducive for the greater well-being. So this is what we are finding all around the world, actually, as sea learning has been implemented. But I'm really happy to, if you could bring a slide backwards, please. If you could take a slide from earlier. Yes, this one. So, 2 years ago, sea learning was something that Himachal Education Department has embraced as they entered into a relationship with Piramal Foundation to bring sea learning in Himachal. And at the signing of the MOU by the Rakesh Kanwar, the Secretary of Himachal Education Department, and the Piramal leadership, Education Secretary has to say this: every child deserves the opportunity to grow into a good human being. But achieving this is no simple task. It requires a well-structured system to instill these values in our schools. And sea learning is perhaps the only solution that we can see. We were genuinely excited when this idea was first introduced. I see this as a valuable opportunity, and we are committed to making the most of it to ensure that every child in Himachal Pradesh benefits from this program. I'm really happy as the executive director of the Compassion Center here at Emory University to be able to have this program that is taking the vision of the Dalai Lama, that is informed by the Indian wisdom, Indian knowledge, to put in this curriculum. And this curriculum not only is now helping many children and the families around the world, but it will have a real opportunity to
inform our students in Himalayas and in Kinnaur, the district that I come from. I will end with this brief anecdote about the program. There are many such, but I was myself in Junjunu a few years ago, a couple of years ago, had the opportunity to visit one of the schools where the C-learning is being implemented, met the principal, the teachers, the students, even the parents. What they shared with me was that C-learning transformed their school system. The principal said that she used to treat the teachers with the kind of the stick in the hand, as a discipliner. But after C-learning was implemented, she saw them differently, and it changed the relationship with them. It promoted trust, and now there is a sense of trust with the principal and the teachers. Teachers said the same with the students. Their attitude towards students have changed, and that created such a harmonious relationship with students and the teachers. Students themselves, one of the students said that apparently he was very, very angry, but once the C-learning was introduced, he changed, he got the tools to manage his emotions, and that changed his relationship with other students. Someone who was hated, in his class and the school, now actually that they love him because of his embracing of a more, healthy, compassionate attitude. And parents told me, the two parents that we met, they sent their children, took out from public school to send to private schools, because in India, we know that private schools tend to draw, the teachers, and at least the perception is that they get better education. But when the C-learning was introduced in these public schools in Rajasthan, in Junjunu, they saw the change in the students, their learning, their attitude, their behavior, and their own mental health. So as the word spread, as more and more, parents first learned, they didn't quite believe, but then as it becomes very obvious, they said that now they have taken their children out from the private school to put in the schools, public schools where C-learning is being taught. And they are seeing that what children learn there, they come home, and actually, in many times they help the parents if they are going through their emotional struggles. So this is something that I want to share, and we are really happy that in a few weeks, just a couple of weeks, we are actually launching what is called the Compassion Shift, which brings C-learning to the schools of all ages around the world, and the compassion training for the adult called the CBCT, Cognitively Based Compassion. Both of these programs provide these inner tools that the Indian tradition has millennia, that the practice and the pass down from one generation to another. This knowledge has been preserved in Tibet for long, and from Tibet to the Himalayas. Today, this knowledge that has informed the Himalayan culture is also providing the hope and the nurturance for so many children around the world. So I'm really happy to be presenting this, and how that this program will flourish in Himachal and in India further. And I will conclude by wishing you a great rest of the conference. Thank you so much for having me as part of this conference. Have a good day. Thank you. So that concludes my presentation.
just wanted to learn some more about it. And I just wanted to know how do you, apply it in practical life? Like if we have to, instill compassion in a child or in a person, how do we do that? One thing. And the other thing is that is it related to moksha? Because I think moksha or liberation is the ultimate value. You were also talking about the spirituality, inculcating spirituality among the children and the people. So, how is it also, taught how to be spiritual? I mean, as a layman, I just wanted to know about this. You've really made me curious. Thank you. वो लीव हो गई लीव हो गई हाँ चलो मैडम टेक्निकल एक बार एक बार पूछो हाँ मेरी जैसे ही मुख्य अतिथि महोदय जी कॉन्फ्रेंस रूम में पधारे कि हम सभी खड़े होकर के उनका स्वागत करें। या सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। महोदय जी आने वाले हैं, बीच हमारे बीच उपस्थित हैं लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज अदर की उपाचार्य डॉक्टर पूनम मेहता, अजय चौहान, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद गुलदार जी और यशनिधि जी। हम इन महानुभावों का स्वागत करते हैं। तीन तक करने वाली ये अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति आज से मना कर दो तो जाने अवसर है। तो जाओ सुनो एक वॉलंटियर यहाँ खड़ा करूंगा कोई
I request Dr. Negi and to be prepared for her keynote address. यहाँ मत करो बस वीडियो में दूसरा वाला जाए दूसरा वाला हाँ एक एक खींचो धागे को All participants and dignitaries that this 3-day international conference on the topic community, culture, and conservation, tribal pathway to sustainable prosperity is being organized by Thakur Singh Negi Government College, Reckong, in collaboration with District Administration. 147 participants, esteemed delegates, keynote speakers across the world are participating in this international conference. Intellectual times
and scholars presented there. आपको से देखी राजकीय महाविद्यालय रिकॉन्ग और जिला किन्नौर द्वारा आयोजित की जा रही 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर हम सभी के बीच हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान जगत सिंह नेगी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय है कम्युनिटी कल्चर एंड कंजर्वेशन ट्राइबल पाथवे टू सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी में आकर हमारा मनोबल बढ़ाया। इस समारोह की देश सर हम आपके बड़े आभारी हैं। May I now request our college principal, Dr. Uttam Chand Chauhan, who is also the convener of this international conference, to facilitate the worthy chief guest, Honorable Minister for Revenue, Horticulture and Tribal Development, Government of Himachal Pradesh. Please give a very warm round of applause to our worthy chief guest. श्रीमान जगत सिंह नेगी जी हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री होने के साथ साथ समस्त हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिल से गर्व है। तो मैं इस समय पर हमारे महाविद्यालय में इनका भरपूर सहयोग मिलता रहता है, चिंतित रहते हैं महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास को लेकर। धन्यवाद सर। May I now invite our college principal sir to present a welcome note to the worthy chief guest and delegates, please. राधेवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्तमान में भारतीय सभ्यता संस्कृति और विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के कर्मवीर कर्मशील कर्मठ माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी राजस्व बागवानी जनजातीय एवं जन शिकायत निवारण मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, इस विषय को लेकर ये हमारा अंतरराष्ट्रीय 3 दिवसीय जो हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है, अगर इसके प्रैक्टिकल की बात करें, मुझे लगता है कि हमारा ये जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, मंत्री जी के आने से वर्तमान में जैसे मैंने बात की कर्मशीलता और कर्मठ की बात की, तो प्रैक्टिकल शेप आप दे रहे हैं। चाहे निगुड़ सरे की बात करें, शिवकिला की बात करें, और जितने देव समाज से जुड़े यहाँ कार्य देखे हैं हमने, मंत्री जी का उसमें जो सहयोग रहा है सापेक्ष रूप से, उसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से और ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जुड़े हुए हैं, हमारे डिग्निटीज प्रोफेसर्स प्रिंसिपल्स सभी की ओर से आपको सर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय कुलपति महोदय जो मेरे गुरु भी रहे हैं, 35 सालों से मैं उनके सानिध्य में हूँ, तो हमारे इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के चीफ पैट्रन है महावीर प्रोफेसर महावीर जी, कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जिलाधीश श्री अमित शर्मा जी जो हमारे पैट्रन है इस 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको अभी वर्चुअल क्योंकि उनकी बीसी है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उनको जाना पड़ा है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच एसडीएम साहब अमित कुमार बैठे हैं, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच जिला परिषद के मेंबर आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और जो भी हमारे, मैं अभी ये कहना चाहूंगा सर आपसे, हमारे प्रिंसिपल्स कुछ 3 कॉलेज से और वीसी साहब हमारे हिमाचल विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और जो आशीर्वाद और जो सानिध्य और जो डायरेक्शन में वीसी साहब ने भी की कि जो भी करना है उसको डिस्कशन करके घर नहीं जाना है, उसको प्रैक्टिकल शेप देना है। हमने सर प्रयास किया है कि जितना हम अपने आप को इस 3 दिवसीय कार्यशाला या शिविर या कॉन्फ्रेंस की बात है, उसका जो रिजल्ट है उसको हमने न्याय करने का प्रयास किया है। और हमने आज
ऐसे डिग्निटीज को अपने यहाँ बनाया है जिनको सम्मानित करवाना है, जिनका हमारे एकेडमिक्स को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माननीय गोलदार जी, आपका स्वागत है, और प्रोफेसर पी एस नेगी जी, आपका स्वागत है। क्योंकि समय का बहुत अभाव है, मैं पूरा परिचय सबका देना नहीं चाहता। माननीय महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाहर 7 कंट्रीज के, बाहर विदेश के 7 कंट्रीज के प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े थे, और जिन्होंने इसी विषय पर हमारे बड़ा जो विषय संवेदनशील रहा है इसके ऊपर बहुत चर्चा की है। और 147 हमारे जो ऑफलाइन ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त 9 अन्य राज्यों से जो हमारे बीच में प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर जुड़े हैं, उसका भी हमारे लिए फायदा होगा। और सबसे अधिक फायदा हमारी फैकल्टी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए होगा। और आने वाले समय में आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं एक बार पुनः आपके आने का यहाँ पर आगमन कर बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। Thank you, Principal Sir. May I now request our worthy Chief Guest Sir, Principal Sir, SDM Sir, to release the souvenir of this 3-day international conference. माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर सुविनियर है उसका विमोचन करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय जी, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में लगभग 155 डेलीगेट्स, रिसर्च स्कॉलर्स ने भाग लिया। दुनिया के की नोट स्पीकर्स, इन डेलीगेट्स ने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। और अभी थोड़ी देर पहले जिला किनोटे जी डॉक्टर लोबसन तेजी, जो कि अमेरिका के अटलांटा से जुड़े थे, और वहां अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो अभी उन्होंने 1 बजे वहां से अपना की नोट स्पीकर्स का एड्रेस प्रस्तुत किया। उनका विषय था Compassion based education for a sustainable future, Himalayan wisdom and the global impact of skill learning. धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय जी, आपने सुविनियर का विमोचन किया। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य उत्तम चंद्र चौहान जी को किन्होंने टोपी। सोई का फोन आ रहा था, वो क्या बोला था, वो लड़की को बोला उससे भी पंजाब यूनिवर्सिटी में आपकी महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जी को किन्होंने टोपी और खतत बना करके, जो कन्वीनर भी हैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के, उनको सम्मानित करें। उनके बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमान DS गोलदार साहब जी से कि जिन्होंने एकेडमिक्स के फील्ड में और कहीं नहीं, हिमाचल प्रदेश में देखते रोल निभाया है, तो मीडिया आते हैं, और आपका निवेदन है तो आपके प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में गोलदार साहब के बाद निवेदन रहेगा BS नेगी सर से, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी। टॉपिक और स्मृति चिन्ह भेंट करके महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर और को कन्वीनर ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर कनक देवी जी से आग्रह रहेगा कि वो भी आगे आए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी सर को भी, और रिटायर्ड प्रोफेसर BS नेगी सर, जोरदार तालियां हो जाएगी for his valuable contribution in the field of academics and in this occasion. कोरोना प्राइज जी है,
social worker. May I now request Ma'am Dolma Price. Please join us. जरक सर हमारे महाविद्यालय के विश्व प्राध्यापक और को कन्वीनर सर आप जी आगे आए। जी मोदी जी आपको भी सम्मानित करेंगे। May I next request Shri Baldev please for his valuable contribution to the field of social work, please. Baldev please, Chief. हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट और वन ऑफ की नोट स्पीकर डॉक्टर ब्रजेश चौहान। जोरदार तालियां डॉक्टर ब्रजेश चौहान के लिए। ब्रजेश चौहान जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और सर इनका बड़ा सराहनीय योगदान रहा है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन में। जोरदार तालियां डॉक्टर ब्रजेश चौहान जी के लिए। मैं नाउ रिक्वेस्ट बी हितेश नेगी जी to join us. He would be also honored by you about the chief guest. हितेश नेगी जी अगर कृपया सर आप आगे आइए। हितेश नेगी जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से मान प्राप्त करते हुए अब हमारे एसडीएम साहब को भी मुख्य अतिथि महोदय जी इस अवसर पर सम्मानित करेंगे। मेरा निवेदन है मुख्य अतिथि महोदय जी से कि हमारे नौजवान डायनामिक प्रॉमिसिंग एनर्जेटिक एसडीएम साहब को भी हमारे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गीता लेवी, एसोसिएट प्रोफेसर हमारे भी सम्मान की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह जी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रोफेसर महावीर चौहान जी ने जो हमें डायरेक्शन दी थी ओपनिंग सेरेमनी के हमारे मुख्य अतिथि थे, हम उनको भी अभिनंदन करते हैं, आज कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। And now invite on stage Dr. गीता नेगी जी। मैं माननीय मुख्य अतिथि मोदी जी को निवेदन करता हूँ कि वो कृपया मंच पर आए और इस अवसर पर अपना शुभ संदेश और आशीर्वाद देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। मिस्टर सर। मैं आप सबको इस कार्यशाला का आयोजन किया है, इससे जुड़े सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे जिले के अंदर इस लेवल का जो क्लेम यहाँ हुआ है, सफलतापूर्वक हुआ है, बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ इस कार्यशाला में विशेषकर जो चीफ पैटर्न है हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर महावीर सिंह जो वर्चुअली जुड़े हैं, उनका भी उनके साथ बहुत सारे जिन व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया है, मैं उनको भी संबोधन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। जिसमें हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर, जिसमें कन्वीनर डॉक्टर उत्तम चंद चौहान जो प्रिंसिपल है हमारे डिग्री कॉलेज के, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जनक नेगी, एसोसिएट प्रोफेसर, की नोट स्पीकर्स डॉक्टर जो अभी जुड़े हैं आपसे, जो लाहौर से है और जो यूएस से जुड़े हैं, तो रात के वहाँ
12 बजे है, तो उनका भी जो है मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। डॉक्टर गीता देवी, प्रोफेसर अक्षय शर्मा, इनका भी स्वागत, और विशेषकर जो स्पेशल गेस्ट डॉक्टर पंकज मसूरिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर, डॉक्टर पूनम मेहता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज श्रीनगर, डॉक्टर ब्रजेश चौहान, विजिटिंग फैकल्टी IGMC शिमला एंड HPU, और यूनिवर्सिटी के जो डेलीगेट्स हैं, डॉक्टर दिनेश भाटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस, डॉक्टर भंडारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स साइंस, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर धर्मकीर्ति, डॉक्टर शांता एंड डॉक्टर मोहित, ये सभी जो है मेरे ख्याल इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच भी इन्होंने रखी है, और इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑल दी मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और इस कंक्लेव में माननीय हमारे सभी अतिथिगण, विद्वानगण और उपस्थित सभी सज्जनों, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य तथा शोधार्थियों का किन्नौर की इस पावन भूमि पर और इस महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज कल्चर एंड conservation tribal pathway in sustainable prosperity, इस विषय पर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अपार गर्व और सम्मान की बात है। यह अवसर केवल संवाद का नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपराएं और संरक्षण को जोड़कर जो है भविष्य की एक नई विकास परिभाषा करने का है। इसमें विशेषकर हम इस किस्म की संगोष्ठियों में बहुत सारे विचार हम यहाँ रखते हैं, और उसके बाद फिर बीच में काफी लंबा समय हमारा ब्रेक आ जाता है, फॉलो अप कोई नहीं होता है। सबसे जरूरी है कि इसमें कुछ निष्कर्ष निकालकर बहुत सारे बिंदुओं को लेने के बजाय 2-4 ऐसे बिंदुओं को हम चिन्हित करें, ताकि उसको फॉलो अप करके हम उसको आगे बढ़ाकर समाज में, या विशेषकर हमारे अगर जनजातीय क्षेत्र की बात करें, कैसे हम उसका लाभ आने वाले समय के लिए वर्तमान में उसको मिल सके, उसमें हमें कोशिश करने की जो है विशेष जरूरत है। अब विचार तो यहाँ अनेकों आएंगे, और हर विचार अपने जगह पे सही भी हो सकता है, परंतु वर्तमान के परिवेश में ऐसे विचारों को हमने आगे बढ़ाना, उसको आगे करने की जरूरत है। जहाँ तक ट्राइबल से संबंधित हम यहाँ बात करते हैं, अब ट्राइबल का अपना अलग से एक समृद्ध जो है यहाँ की परंपरा भी है, हमारी सोच भी है, बड़े लंबे समय से। अगर मैं आज कहूँ तो कुछ बातों को लेकर हम लोग जो है अपने आप को उसमें, जो हमारी समृद्ध संस्कृति है या जो परंपराएं हैं, उसमें कुछ ऐसे बीच बीच में नाम आते हैं या कोई विचार आते हैं जहाँ हम अपने आप को जो है हीन भावना के साथ आगे जोड़ते हैं। अभी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हिमालय, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जिसपे उन्होंने डॉक्टरेट किया, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, हमारा भी कॉलेज का एक यहाँ पर किन्नौर का स्टूडेंट एसोसिएशन था, तो जो है तरुण किन्नर के नाम से था। शायद हम लोग बीए या सेकंड में पढ़ते थे। हमारे सीनियर्स कोई किताब के कुछ अंश लेकर आए, किताब भी नहीं था। अब यहाँ हमारे गोदार जी है, शायद इनको याद होगा उसमें क्या क्या होता था। उस किताब को बिना पढ़े के अंदर क्या शोध था, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए था, और फिर ध्वनि मत से पारित भी हो गया।
हम लोग 2-4 लोग थे जिन्होंने उसका विरोध जरूर किया, परंतु वो पारित हो गया। क्योंकि उस समय ना तो व्हाट्सएप का जमाना था, ना ही सोशल मीडिया का जमाना था, उसके बावजूद भी बिना सोचे समझे वो बात किया गया। तो इस किस्म की बात हमें नहीं होनी चाहिए। अभी जो है हमारी सेम जो वॉलेंट्री सिस्टम है, हिमाचल के बहुत सारे जगह पर है, सिरमौर के अंदर भी है, और भी एक शादी हुई वहां, तो इतना उसको जो है बढ़ चढ़ के टीवी चैनलों ने टीआरपी बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं, तो उसमें हिंद भावना की बात ही कहा है हमारी। कई लोग पूछने लगे, एक आध एंकर किसी चैनल का मैसेज कर रहे, मेरे इसमें गलती क्या है? हमारे उस जमाने में हमारे पूर्वजों ने एक अच्छी सोच रखी थी कि यहाँ पर जो है इस किस्म की परंपरा को रखने से शायद लैंड होल्डिंग्स को ध्यान में रख के किया होगा, या जो है परिवार के अंदर एकता रखने की बात को लेके किया होगा, परंतु वो तरह उस जमाने में था ठीक, और आज के डेट में अगर किसी को ठीक लगता है तो उसमें क्या खामी है? तो ये हमें सोचना पड़ेगा। हम जो है नई बातें ला रहे हैं, पुरानी बातों को हम जो है शायद कई जगह पे हीन भावना की बात करते हैं, परंतु जो हमारे ट्राइबल समाज में सबसे बड़ी कुरीति है, विशेषकर जो हिंदू धर्म है, वो है छुआछात का। उसके ऊपर हम लोग बोलने के लिए आज भी हिम्मत नहीं रखते। हमने डिग्रियां हासिल कर ली, पद हासिल कर लिया, परंतु हम समाज में इस बात को बोलने से डरते हैं। नेता लोग इसलिए डरते हैं कि वोट का चक्कर पड़ जाएगा, और जो बीजेपी लोग हैं वो सोचते हैं कि ट्रोल हो जाएंगे, पता नहीं क्या है। तो असली कुरीतियों की तरफ तो हम लोग जाए दे रहे। ट्राइबल में कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी तो यही है। बाकी हमारे देवी देवताओं का जो एक अलग से सिस्टम न केवल किन्नौर में है, पूरे हिमाचल में है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें सुधार की जरूरत है, की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो जो है अगर किन्नौर के संदर्भ में किन्नौर का जो इतिहास है, उसका इतिहास है आजादी के बाद का अलग है। आजादी का पहले का तो लिखा हुआ नहीं है, कई यात्री आए, उन्होंने अपनी बात लिखी, उसी को आगे बढ़ाया हुआ, परंतु आजादी के बाद भी जो सच्चाई है वो आज के हमारे किन्नौर के युवाओं को पता नहीं है। जिला कब बना, कैसे बना, ट्राइब कब बना, कैसे बना, अब इसके बारे में जब तक सच्चाई ना हो तो दर पीढ़ी एक झूठ को हम जो है आगे से आगे उसको लगाया जा रहा है। इसके ऊपर सही बात जो है जाना, सही बात जो है युवाओं को दर पीढ़ी आगे पहुंचाना, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है। बाकी बोलने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे हम यहाँ पर कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, किन्नौर में प्रोजेक्टों को लेकर एक वर्ग हमारा युवा जो है कहते हैं कि भाई अब ये बहुत हो गया, ये बात भी ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ लोगों ने अपने स्वेच्छा से एनओसियां दे रखी है कि कहते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट का होना जरूरी है, उससे उनके इलाके का विकास भी होना है। तो ये सब देखना है कि एक ही जो है पैमाने से सभी मुद्दों को हाथ देने की जरूरत भी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा किस जगह पर कौन सा सिस्टम जो है फिट होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो नीचे के इलाके का पैमाना है वो हमारे जनजातीय क्षेत्रों में फिट हो जाए। तो ये सबको देख के आगे बढ़ने की जरूरत है। आज विशेषकर मैं समझता हूँ शिक्षा कहते हैं, अगर शिक्षा से ही सब कुछ बदलने लगा तो ये कुरीतियां जो है हिंदू धर्म में सबसे पहले बदल देना चाहिए था। आज अगर आपसे आए, अगर नेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा अगर आज शिक्षित लोग हैं तो शायद हिमाचल में है, और भी डिस्ट्रिक्टों में पीछे नहीं है। पर ये जो हमारी कुरीतियां ये खत्म कैसे होगी? तो मेरा आप सभी विद्वानों से ये निवेदन है कि इसके तरफ किस तरह से हम निकले। ट्राइबल में बहुत सारी अच्छाइयां भी है, ट्राइबल में बहुत सारी कमियां जो लंबे समय से है, और समझता हूँ कि मुझे तो लगता नहीं इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला है। तो हमारी मानसिकता के अंदर मैं तो समझता हूँ हमारे डीएनए के अंदर ये चीजें घुसी हुई है, जिससे बाहर हम निकल ही नहीं पा रहे। बड़ी बात है, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे और साथी भी करते हैं, परंतु कैसे हम इसको निकले, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए तो एक अलग से आपको इस टॉपिक में जो आपका जो मेन थीम है कम्युनिटी कल्चर कंजर्वेशन, ट्राइबल क्या कहते हैं पाथवे,
ऑफ सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी। तो मैं ये भी जोड़ना चाहिए था, प्रोस्पेरिटी तो किन्नौर में कम का है, जो आज किन्नौर को ट्राइब के कारण, किन्नौर को जो है यहाँ के स्पेशल क्लाइमेट के कारण तो एप्पल इकोनॉमी ने इतना बूस्ट किया है, उससे ज्यादा प्रोस्पेरिटी क्या हो सकता है। अब हमारे दिमाग का प्रोस्पेरिटी फिर भी नहीं हो रहा है, हम लोग तो बड़े प्रोस्परस हो गए हैं, इतना है कि किन्नौर में कोई भी नहीं बनता। सबसे बड़ी बात यह है, अब जमीन देने का कार्यक्रम जब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री थे, बहुत बढ़िया एक लैंड लॉज किया है, जिसमें हिमाचल के लायक, जिसमें 20 बीघे से कम जिसके पास जमीन है उसको सरकारी भूमि में 20 बीघे देने का, हजारों हिमाचल के लोगों को उसका मुबारक। बाद के वर्षों में ये जो है नीचे के इलाकों में बंद हो गया, परंतु ट्राइबल एरिया के लिए राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो लगातार जारी रखा, और उसके कारण किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, पांगी भरमौर में अगर ये लैंड लॉस नहीं होता वो तोड़ देने का, शायद आज इतनी प्रोस्पेरिटी नहीं। लैंड होल्डिंग्स हमारे बहुत कम थे, तोड़ में मिला। एक ग्रुप जो शुरू में थे, जो समाज में मान लीजिए गांव में जिनकी सर्विसेज थी, वो लोग इसका बेनिफिट उठा चुके, 20 बीघे के करीब करीब मोतोड़ में लिया, आज बहुत बढ़िया बाग बगीचे उसमें बने हुए हैं। अगर 20 बीघे में शायद किसी का बगीचा ठीक बन रहा है तो 40-50 लाख से ऊपर मिल रहा है। इतनी प्रोस्पेरिटी लैंड लॉस को एक खाली रिफॉर्म के कारण, आज के दिनों में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, कारण जो है ये लैंड रिफॉर्म्स जो है हिमाचल में उसके ऊपर एक किस्म से रोक लगी। परंतु हम लोग जो है जनजाति क्षेत्र के लोग भाग्यशाली इसलिए है, केंद्र का कोई भी कानून, प्रदेश सरकार का कोई भी कानून, गवर्नर को जो है शेड्यूल 5 में शक्तियां दी गई है, वो यहाँ के संदर्भ में उसको संशोधन भी कर सकते हैं, उसमें जो है किसी तरह का परिवर्तन करना है वो भी कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए 2014 से लेकर 18 तक शेड्यूल 5 में क्षेत्रों में जो है एफसीए को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को हटाया गया, तो लोगों को नोटोली मिले। और वर्तमान में हम लोग सरकार में तो जो पावर्स है वो गवर्नर के पास सीमित है। 7 मरतबा में गवर्नर साहब से मिला, अभी भी 3-4 हफ्ते पहले मिला, और उन्होंने सितंबर का जो है आगे कुछ न कुछ हो जाएगा, पता नहीं अब सितंबर तो खत्म होने जा रहा है। तो ये जब तक जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के पास लैंड होल्डिंग्स नहीं होगी, वो सब खत्म। जब लोग आज बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, आज देख रहा हूँ बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 20 साल से ऊपर नौजवान जो कई जो है कॉलेज से डिग्रियां प्राप्त करके घरों में बैठे हैं, करने को कुछ नहीं है तो नशे की तरफ चले गए। चिट्टे का जो है यहाँ भी बहुत ज्यादा जो है प्रकोप आ रहा है। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे या गरीब घरों के बच्चे सब उसमें सम्मिलित है, उस ओर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो एक आप सबसे मेरा विशेष निवेदन इस बात का है कि जब तक समाज में सभी वर्गों को बराबरी का, चाहे लैंड होल्डिंग्स के अंदर हो, अब नौकरी तो सभी को मिलने वाला नहीं, कम से कम लैंड होल्डिंग्स तो जो है कम से कम एक बराबर का कर सकते हैं, हम ट्राइबल में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संविधान की शक्ति है। हमें ना पार्लियामेंट में जाने की जरूरत है, ना हमें जो है विधानसभा में जाने की जरूरत है। हमारे गवर्नर जो है कैबिनेट का जो रिकमेंडेशन है, जनजाति सलाहकार परिषद का रिकमेंडेशन है, उसको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया कि 3 महीने से ज्यादा चाहे वो विधानसभा का बिल है उसके ऊपर जो है, या पार्लियामेंट का बिल है उस पर ना तो राष्ट्रपति बैठ सकते ना गवर्नर बैठ सकते। हमारा तो 2.5 साल से ऊपर हो गया कि हमारा जो रिकमेंडेशन है ट्राइबल एरियाज में नोटोर का मामला जो है मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर फैसला ही नहीं हो रहा। एक विशेषकर हमें जो अगर प्रोस्पेरिटी को अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ, पता नहीं आप लोग किस कौन से हिसाब से देखा होगा, इंटरनेशनल प्रोस्पेरिटी है, मैं तो आर्थिक प्रोस्पेरिटी की तरफ पहले जा रहा हूँ। तो यह जरूरी है कि अब किन्नौर में भी लैंड होल्डिंग्स कम होने के बाद ये जो है पार्टीशन, सेगमेंटेशन ऑफ लैंड, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी परिवार का 10 बीघा जमीन थी, वो भाई बढ़ के 5-5 हो गए, उनके बच्चे हुए आगे वो भी बढ़ के गए तो 2 बीघा है, क्या करेंगे 2 बीघा जमीन से।
दूसरी तरफ सरकार कहती है कि बॉर्डर एरिया से प्लान बंद कर। प्लान बंद कैसे होगा? सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है, आप वो देना नहीं चाहते हमें। हमें देंगे तो कम से कम मटर ही उगाए, हम कम से कम एक नहीं है तो मटर तो है, मटर उगाए। आज लद्दाख का सारा इलाका जो चाइना ने कैप्चर कर रखा ज्यादा से ज्यादा, बोलने की हिम्मत नहीं हमें किसी की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा नहीं कोई घुसेगा। जबकि पूरा लद्दाख में जाके आइए, आप पता लगेगा लद्दाख में आज भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं सोनम। वो क्यों बैठे भूख हड़ताल? दिल्ली तक पैदल क्यों गए? हम भी दोषी, हमने उनका साथ नहीं दिया। उस समय सबको साथ निकलना चाहिए था दिल्ली की तरफ, पर हमने सोचा कि हमारे पास तो पैर में जो है कील घुसा नहीं है, तो वो जाने देंगे। तो ये भावना जो है ट्राइबल वननेस की भावना है, ये नहीं है हमारे जो ट्राइबल वननेस की भावना है। ट्राइबल में सबसे पहले तो यही है कि अपनापन है, अपना होना चाहिए सब कुछ। हम उससे बिछड़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर जाने की सख्त जरूरत है, मैं यही समझता हूँ। और बाकी जो भी आपके यहाँ पर डेलीब्रेशन हुआ है, बहुत सारे विद्वानों ने वर्चुअली फॉरेन से भी और इधर भी इंडिया से भी बनाया है, उनको आप एक अलग से कमेटी बनाकर कौन से पॉइंट्स हैं उनको लीजिए। हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान साथी हैं और के इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, उनसे सिर्फ यही मेरा निवेदन है कि सटीक हो, निष्पक्ष हो और सही जानकारी युवाओं तक पहुंचे, ये हमारा होना चाहिए। सुन सुनाई बात पर इतिहास नहीं होना चाहिए। किन्नौर की बहुत सारी जो किताबें लिखी गई है बहुत सारी यात्रियों ने, अगर पुरानों में जाएंगे आप तो जो ऑस्ट्रिया से आए थे लोग, उनका अगर बुक्स पढ़े और जो हमारे यात्रियों के बुक्स पढ़े, उसमें रात दिन का उन्होंने शोध करके लिखा है। हमारे लोगों ने सिर्फ गांव में गए, एक बुजुर्ग से सुना, उसको आगे उन्होंने उसको लिख दिया है। परंतु वो शोध करता है जो 3-3 साल गांव में रहकर उन्होंने वहां खुद स्वयं जो है उसको जो है देखा है और फिर उसको जो है किताबों में डाला है। खुद वो होना चाहिए, ना कि कट पेस्ट वाला शोध होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, कट पेस्ट का काम चल रहा है, ओरिजिनल रिसर्च नहीं है। जरूरत है ओरिजिनल रिसर्च का। ओरिजिनल रिसर्च तब होता है उसमें टाइम लगता है, और जो निकल के आएगा वाकई वो जो है एक इतिहास जो है दस्तावेज बनता है। तो वाकई उस इलाके में, वाकई उस इलाके के लोगों की सोच, वाकई उस इलाके की संस्कृति को जो है आप सही मायने में उसका मूल्यांकन करें। तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, और इतना ही कहकर सबसे मुझे इस बात का सुखद अनुभव है कि मेरे जिले के अंदर, जिसमें मेरे युवा हमारे साथी हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, सबने मिलकर और जो बाहर से आके आप सबने अपना योगदान दिया है, बहुत अच्छा रहा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी जिनके और कार्यशाला आप रखें उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ कॉलेज की बात होगी, बहुत सारे प्रिंसिपल साहबान भी हैं, हमारे वीसी साहब भी उधर शायद वर्चुअल में सुन रहे हुए या नहीं भी सुन रहे, कोई बात नहीं, पर ये है कि जुड़ा हूं सर। जो है बहुत अच्छा सर नमस्कार है। सर सर। मेरा सिर्फ यही कहना है कि एजुकेशन को लेकर हम अगर ट्राइबल एरिया से पूरा शुरू करें, मेरे पास ट्राइबल में यहाँ रेकोंग का कॉलेज सबसे पुराना है, 1994 का है। सेकंड कुकुमसेरी का है, थर्ड भरमौर का है, और मैं सभी कॉलेजों में गया। तो हमारे कॉलेज को, इसको तो हम एक मॉडल कॉलेज के रूप में ला सकते हैं। कुकुमसेरी में बच्चे नहीं है, 30 बच्चे भी नहीं, तो भरमौर में बच्चों की संख्या बहुत है, उसको भी और बेहतरीन तरीके से हम ला सकते हैं। कम से कम हम एक बार ये तो बताएं कि हमारे जो बच्चे यहाँ से पलायन करके रामपुर में जा रहे हैं, 4,000-5,000 बच्चों के बीच में उनको मौका ही नहीं मिलता। हमारे कॉलेज में तो हर बच्चे को एकेडमिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो, हर जगह पे इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर टीम में जाने का मौका मिलेगा। इतना बढ़िया जो है तो स्कूल की तरफ जाए, फिर भी अब हमें देखना पड़ेगा कि क्यों जा रहे हैं। पिछली बार आपके कॉलेज में आना हुआ, आप लोग फिर सेकेंडरी स्कूल में गए और थोड़ा मोटिवेशन किया आपने। अब और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है कि हमारा ये जो कॉलेज है, खासकर रेकॉम्प्यूटर ट्राइबल का पहला कॉलेज, ये कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बने, बढ़िया बने। एक्सीलेंस नहीं कि सिर्फ
मेरिट वालों को ही लिया जाए, जो सबसे निचले पायदान में उसको भी एडमिशन करा के उसको भी इस लायक बनाया जाए कि वो जाके जीवन में बेशक नौकरी ना मिले, कम से कम अपने पैरों पे खड़े होने का, समाज में एक जो है खैतू निभाने का। तो मैं इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय जी, आपके शानदार उद्बोधन और आपने जो विचार सुझाव सबके समक्ष रखे हैं, इसका हम अनुकरण और अनुसरण करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे बीच आज की जो की स्पीकर है डॉक्टर गीता नेगी, is an associate professor of botany at University of Allahabad. For a brief period, he also served at University of Delhi. Her research interests include ethnobotany, wild edible plants, with special emphasis on bridging traditional knowledge with modern scientific validation. I welcome ma'am to deliberate upon your topic. Good morning, everyone. First of all, I'm very grateful to the principal, T.S. Negi College, and the Kinnaur administration and chairperson of the conference, VC of HB University, for organizing this 3G International Conference and having me here as a keynote speaker. And today, I will talk about traditional knowledge, how it will pave a way for the food security and sustainable development, along with certain laws which gives us protection, which gives us the rights to protect our traditional knowledge. Firstly, I would like to tell about the traditional knowledge as per the Convention on Biological Diversity. Traditional knowledge, innovation, and the practices of the indigenous people personifying the traditional lifestyle as well as their techniques is the traditional knowledge. It is present in the form of medicine, folk songs, folk dances, or handicrafts, foods, etc. The problem with the traditional knowledge is that it is not documented. It is not documented, and people are not aware about its value, its importance, right? So we need to protect our traditional knowledge so that we create an awareness about. So we need to protect traditional knowledge so that we can create awareness about its value and we can commercialize this wherever it's appropriate with the equitable benefit sharing, and then obviously the preservation and to inhibit the unauthorized use by the outsiders. TK, traditional knowledge is holder of the traditional knowledge are the community, not an individual. Not any single individual cannot claim for the traditional knowledge. It is within the community. So benefit of traditional knowledge should be given to whole community, not as a single individual. So this traditional knowledge has a potential for the commercialization, but for that we need to do a deep, extensive research and the search in the natural resources for the important biochemicals is there. If this prospecting or the commercialization of traditional knowledge is done properly, it will create a income as well as it will create the sources for the protection of local bioresources and the conservation of the bioresources. But if it is not managed well, it will lead to the overexploitation and the unauthorized exploitation of the traditional knowledge, and it will again bar the traditional knowledge holders from a benefit sharing. So here problem is that if companies or the industries or the individual they they invent certain products based upon the traditional knowledge and they get a patent on that, that will bar the traditional knowledge holders, local people from using their own resources. This is called the biopiracy, and India has suffered this. We have a lot of biopiracy examples of the Colgate, neem, turmeric, even yoga. Basmati is there. And for that, after witnessing, India was the first to raise a question under the World Intellectual Property Right Organization to have a traditional knowledge as an intellectual property rights like the other industrial products. So here's some international law is international. This CBD is there. Under this third point, third objective is
fair and equitable sharing of the benefit. And to implement this effectively, we have a Nagoya protocol which emphasizes on the access and benefit sharing. These are the two principles, which is the prior informed consent and the mutually agreed terms, which means that if any outsiders or the foreigners, they want to use the traditional knowledge, then they have to take a prior informed consent from the traditional holders through a biodiversity management committee, and that guidelines for the benefit sharing has to be decided on the basis of mutually agreed term, which they will decide while negotiating, right? So there are various national laws which provides the protection against the traditional knowledge. It is the Biodiversity Act 2002 and the Patent Act, and then Plant Variety Protection and Farmers' Right Act 2001, then FRA 2006, you all know, and the Geographical Indication of Goods Protection and Registration Act 1993. So these are some stakeholders and all. I'll skip this. And this is there. We have Himachal Pradesh State Biodiversity Board developed or established in 2002 or 2005. Then we have a biodiversity management committee in a block level in Kinnaur, but I'm not aware whether it is in body condition or not. So this is the proper usage of ABS as a assess and benefit sharing. You can have a Kolhapur example, and then another the misappropriation of the benefit sharing. We can see the Devyani pharmacy, which is the latest case is the Pathanjali industry against the Uttarakhand Service State Biodiversity Board. Here they denied the benefit sharing to the local communities. Then this is the protection of plants, varieties, and farmers' right. And TKDL. TKDL is developed by the CSIR to protect the traditional knowledge of India in collaboration with the various state biodiversity boards and the local biodiversity management committees here. Now coming to how our traditional knowledge will help in the sustainable development and the food security of our community. First of all, definition: what is the sustainable development? Sustainable development is the development where currently we meet the needs of our current needs without compromising the future generations' ability to procure their needs, right? So, sustainable development goals, the UN Sustainable Development Goal, they have a 17 list, out of which we have Sustainable Development Goal 2, which is a zero hunger, and second is good health and the well-being. For this, the wild edible plants which we use, is very best for it suits best for the sustainable development goal 2 and 3. We all are aware that whatever food crops we know we have today, they were the wild. They had a wild progenitors, and they evolved to today's condition or the today's level because of the genetic breeding and the plant breeding and the genetic manipulation. And the we, being our tribal and the forest dwellers, we historically relied upon the wild plants for our health and food. And these plants, so we have various multitudes of minor fruits and vegetables which have a potential value for use as in medicines as well as foods and various other purposes, but they are not being domesticated. Additionally, these wild vegetables, they help us to fight against various lifestyle diseases like diabetes, high blood pressure, and the obesity. Where these wild vegetables, they provide not only the basic nutrition, but they will provide a health benefits. That's how they are rich in micronutrients. Plus, these wild vegetables, they grow in the environment where they fight against various biotic and abiotic stresses. These biotic and abiotic stresses leads to the development or synthesis of secondary metabolites by the plants, and these secondary metabolites, they give the health benefits. So because of this, we call it a functional food. These health benefits. So the problem is there is rapid decline in this use of the wild vegetables due to the biodiversity loss and the change in the food preferences and urbanization. Most importantly, the distance between the younger generations and the nature is there. Okay? The problem is lack of awareness and validation of this limits the use of these wild vegetables in the main food system. So what happens is
These wild vegetables which we eat today, they help us to fight the various climatic factors in this surrounding because जो market में vegetables are available, we eat that. From that, what we are getting a basic nutrition. If we consume these wild edible, wild plants, they will give you, in addition to nutrition, they will give you the functional health benefits also. Because these whatever wild vegetables we collect from the wild in for Kinnaur, these plants they are fighting the various abiotic stresses present in this own climate. And these stresses, we are also facing these stresses. So if we consume these wild vegetables, these will help us to fight against the environmental stresses which we are facing. So we should promote the use of traditional vegetables or the wild vegetables which our ancestors used to have. And still 5% of the Kinnaur population, they still use the wild vegetables. Rest younger generation, during my field investigation, I came to know younger generation, they were not aware about the traditional any vegetables they use. And they would say कि ये कौन खाएगा, लाने कौन जाएगा. But they are at a big loss because this is how these wild vegetables will give you the food security in future. With this increasing population, whatever limited food crops we have, that is not sufficient to fulfill our food requirements. For that, we have to look for the other alternatives. So in these cases, these wild vegetables or the edibles, they will give the way for the food security. So these are list of the some wild vegetables which I documented during my survey. Because there are many more vegetables which are being used by our tribals, but I was not able to document that because my perspective was completely different that time. These are some lists, and these vegetables, these edibles, they are used in the form of vegetables, spices, condiments, and the raw fruits. And then out of these few plants, I've screened for their nutritional value and they compare it with the vegetables which are present in the market. And in that, you can see this graph shows the left side, all the graphs, this is their Allium, Medici, Campe Borgiana, Piplenza mesculentum, Eremotus himalicus, and Pegoparum genericum, Lebrotecris, Roripa, Silene vulgaris, Artica diaphora. These all are the wild vegetables which are used by the traditional, your traditional dwellers or the Kinnauri communities, and the right hand side, these all are the marketed vegetables. And you can see the nutrition value of the wild vegetables is here. It's quite high as compared to the, or equivalent or the quite higher than the wild varieties. Then dietary fiber, जो हम लोग linger, we call it in linger. So this is the Diplegium esculentum, which has the highest amount of dietary fiber, means that aids the digestion. You can see protein is there, is highest in Cranberry Cauciana, and in the again wild vegetable, so cultivated जो आपका marketed vegetables है उसमें आपका चौड़ाई है, which is again a semi wild and cultivated one, उसमें ही ज़्यादा है, बाकी हमारे wild varieties में protein contents are very high. And similarly, you can see the essential elements, iron, potassium, vitamin C is higher in your wild varieties. And further, then my next idea was to scientifically validate the traditional use of the Grambe Corsiana and the Erionas himalicus. It's a five Grambe Corsiana in that we screened, and we found that this species they have a higher amount of phenolics and flavonoid contents. Means these phenolics and flavonoid contents are known to have an antioxidant property. And similarly, there was another research paper published by the scientists of the Uzbekistan. They screened the Grambe Corsiana and they isolated alkaloids from this particular plant only. But while we screened this plant, we did not find any alkaloid. This shows that instead we found the highest quantity of the phenolics and flavonoid compounds. This shows that these plants they are fighting against the UV rays. यहाँ पे UV rays content ज़्यादा है. So we need a more antioxidant property. So they have a higher amount of antioxidant properties. Then for functional value, again screen for antioxidant property, and it is again a good antioxidant property comparable to that of the synthetic antioxidant we have ascorbic acid. And then second, another approach was whenever we are promoting the wild vegetables, we have to screen for this toxicity, whether it is toxic to us or not, or to our cell lines also. So there are two types of toxicity. One is acute toxicity, and another is cell line toxicity. Acute toxicity means whenever we are having that vegetable, immediately उसका कोई deleterious effect तो नहीं है. So when we did that on the mice,
we found that 5 gram per kg of the body weight was the LD50, मतलब 5 ग्राम दिया एक body weight की accordingly, तो अभी उसका कोई toxicity effect नहीं था. And then similarly, we screen for the cell line toxicity where we use both the cancerous cell as well as the normal cell line. Again, we did not find any toxicity, and even though IC50 was greater than 640 microgram per ml. So, and another aspect is protection of land race. These are the very crucial for ensuring long-term resilience against the global food crisis. These land races, they are developed and adapted in this environment, but unfortunately, this is displaced by the high-yielding modern hybrids and the changing food preference and the monocropping. There are certain land races which we locally use for the. This is your koda or the kodro. Like lower Kinnaur we call it koda and upper we call it kodra. Then the ogla and then fu and ta, it's a wheat variety. And the fafra is there. And the chip and nyar and chanta. These all are the local varieties. And then all the land races we can sell. And these are the local varieties of the almonds. There are many more varieties of the almonds, but I'm showing you. And these are some, we all know aware about the potential commercial plants, but they are endangered now. You know that because of the deforestation or the one replacement of the one cash crop plant orchard with the rest, we are neglecting this. You know that apricot is, every part of the apricot is has a commercial value. Be it pericarp, be it nut, as the shell is used as a fuel, and then is the seed, we know apricot oil is there. And while interacting with the traditional healers, when I talked to the local amchis, they said it was purely developed from this chili pericarp, and if it's taken in the limited amount like 5 ml, will act as a digestive. Yes, and then almond is there, and we know that 95% of almond this tree is not there anymore. If we compare it with the decades back, there used to be a complete almond orchard, but not anymore. And one more thing we have to be vigilant is, before I conclude, I would say this is while I was screening the Google search, I found these two find in the some site selling this site. So they think Kinora Kodo is there, and for this they said it improves the cholesterol, good cholesterol, and lowers the bad cholesterol, and helpful in the diabetes. For this, claiming this, no doubt traditional people are using this, but to have a credibility of this traditional knowledge, we need to have a scientific validation for this. So it is why my emphasis is to scientifically validate our traditional knowledge. Then secondly, they are saying Kinori green tea. Here, I would like to say, Kinori definitely we have a green tea, but they are saying Camellia, Texas, and Acacia. So there, we should avoid using some misleading information. Camellia is the botanical name of the tea. आपको पता है यहाँ पे चाय की बगान नहीं है किन्नौर में, सबको पता है, पर यहाँ पे लिखा है कैमेलिया. So we should not use such information. And Texas, definitely Texas is found here, but acacia I'm not aware because I did not encounter this plant during my survey. So we should not use such information which will be the derogatory for our knowledge. Secondly, I would like to say we have to be vigilant about the product which is sold on the social platform or the online platform on the name of Kinnaur. ठीक है, अगर किन्नौर के बारे में दिया गया, हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. अगर कोई किन्नौर के नाम से प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को डेरोग्रेट करेगा, राइट? सो हमें क्रेडिबिलिटी लूज होगा. एंड सेकेंडली, हमें ये भी विजिलेंट होना चाहिए, कोई हमारे किन्नौर का नाम यूज करके, किन्नौर का जियोग्राफिकल इंडिकेशन यूज करके ऐसा प्रोडक्ट सेल तो नहीं कर रहा है जो किन्नौर में मिलता ही नहीं है. ठीक है, हमें ये सब बीइंग अ यंगस्टर्स, दिस इज वी आर द होल्डर्स ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड वी आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर नॉलेज. सो वी हैव टू बी vigilant and we have to avoid this one. So this is some endangered medicinal plants. I conclude. If I give you 2 minutes, I would like to share my few experiences or observations during my field survey. So this is one plant you can see. This is a Trillium goveniana. During my field survey, when I visited many forest area of the Kinnaur, and I did not find an intact plant of this particular. Only a one plant somehow luckily I found at a very high altitude.
सब जगह मुझे उखाड़ा हुआ प्लांट मिला था, उसको मुझे कोई ट्यूबर नहीं मिला था, इंटेक्ट प्लांट नहीं मिला था, क्योंकि इसको ट्यूबर को लोकल्स उसको सेल कर रहे थे, क्योंकि ये फॉरेन एक्सपोर्ट होता है, इसको ट्यूबर के लिए इनको यूज किया जाता है। और तो हमें ये समझना चाहिए हमारे यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं वो पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब उनका जो ट्यूबर है वही सर्वाइव करता है, अगले साल वहीं से ही हमारा नया प्लांट जनरेट होता है। अगर हम इसी ट्यूबर को निकाल के फेंक देंगे तो ये प्लांट हमारे लिए बचेगा ही future. So we have to be vigilant about this. Now I am not aware about the status of this particular plant because that time it was very disheartening to see the status of this particular plant. Secondly, this Sasuria oval beta, sorry, I just took these images from some social media. यहाँ पे आप ससुरिया ओवल बेटा इट इज अगेन एंडेंजर्ड। बहुत सारे एरियाज में अगर हम हमारे पूर्वजों से दादा दादी से किसी से पूछेंगे, इवन हमारे पेरेंट्स से, ये प्लांट्स पहले बहुत कॉमन था, ये कॉमन नहीं है, ये हमें बहुत लिमिटेड जगह पे मिलता है। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन अ वेरी वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट वेरी अनसाइंटिफिकली। जाते हैं, अगर आई एम नॉट अगेंस्ट आवर कल्चर, अगेंस्ट यूजिंग दिस फ्लावर, डेफिनेटली वी शुड यूज इट, बट वी शुड यूज इट सस्टेनेबली। आप कलेक्ट कर रहे हो एक जगह से, इस बार कलेक्ट कर रहे हो, अगली जगह वहां से कलेक्ट मत करिए, दूसरी जगह से कलेक्ट करिए। अगर आपको कलेक्ट करना भी है तो एक जगह पे आप एक या दो कलेक्ट करिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ताकि नेक्स्ट हमें ये तो मिले, है ना। सो वी हैव टू सी दिस। This I conclude that the proper documentation, that is the pupil biodiversity register, and the identification of traditional knowledge is very crucial. And secondly, bridging this traditional knowledge with the scientific technologies is very important for the sustainable development. And in addition, if we validate and document this traditional knowledge, it will generate income, plus it will help in the preserving our cultural knowledge, and enabling value addition and livelihood opportunities. Thank you. If any other questions? कोई प्रतिभागी कोई किसी प्रकार का सवाल? Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Geeta Negi, for your valuable insights and explorating your deliberations on your topic. May I now invite my colleague, Professor Surbala Negi, Department of English, to present a brief report on this. It is my privilege to present the closing report on this 3-day international conference. The annual session of the 3-day international conference on community, culture and conservation tribal pathway to sustainable prosperity began on 15 September at ITTP Hall, amalgamating the corporal and the digital, thereby epitomizing inclusivity. It aimed to bring together scholars, academicians, and practitioners from different disciplines to deliberate on issues of tribal culture, identity, conservation, and sustainable development. The inaugural session of the international conference was graced by the esteemed presence of Professor Mahavir Singh, Honorable Vice Chancellor, Himachal Pradesh University, who joined as the chief guest to the online mode, and Dr. Amit Kumar Sharma, Deputy Commissioner, Kinnaur, who also participated virtually as the guest of honor. The event was further honored by the presence of Dr. Pankaj Basotia, Principal G.B. Pant Memorial Government College, Rampur, Bushare, and Dr. Brajesh Chauhan, D.S. Goldar, retired judicial magistrate, as special guests, along with other eminent persons. Dr. Uttam Chand Chauhan, helmsman of this institution, extended a warm welcome to everyone. It was followed by a brief introduction of the conference theme presented by Professor D.K. Negi, who highlighted the focus and objectives of the international conference. Keynote speakers, to the international speakers and keynote speakers, I just want to mention this thing, that your presence has elevated this dialogue beyond national boundaries. We are running short of time, that's why I really need to seize my words. If I mention one name, and I'm not going to do justice to other presenters. It is my privilege to present this. Over the past days, this congregation has been a forum of knowledge, dialogue, and cultural exchange. The deliberations have expounded the timeless wisdom
of indigenous communities and accentuated their cardinal role in safeguarding the environment while fostering enduring prosperity. Through this platform, we heard diverse dimensions ranging from the preservation of intangible cultural heritage to the integration of traditional ecological knowledge with contemporary scientific frameworks. Conjointly, the discussions highlighted the urgency of participatory governance and intergenerational transmission of values. The resolutions adopted herein call for global collaboration, systematic documentation of indigenous practices, and the strengthening of policies that uphold the dignity, identity, and wisdom of tribal communities. We need to conclude this conference with a solemn pledge to perpetuate the ethos of inclusivity, conservation, and prosperity through sustained academic, societal, and policy engagements. On behalf of the host institution, I extend heartfelt gratitude to our learned speakers, international scholars, and our participants whose contributions have made this academic endeavor a monumental success. And I also want to append that around 150, I guess, research practitioners, they presented their paper, and around 6 technical sessions were there during these last 3 days, what we have seen. And I stand before you with a profound sense of gratitude and fulfillment. And just because it is not only a platform where intellectuals they came together, but it provided a different kind of perspective angle to all of us. Okay, and next thing, which is also I remind right now, that is our principal, Dr. Uttam Chand Chauhan, and this conference has been made possible, and it has been transformed into a scholarly agora of international stature just because of the efforts, collective efforts of everyone. And with this, I cease my words. Thank you. Thank you, Professor Subala Devi ji. माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सराहनीय भूमिका निभाई, और जिसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा विश्वजीत, BCA 5th सेमेस्टर, मुख्य अतिथि महोदय जी। पर्दे के पीछे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, विद्यार्थी बच्चे, इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कंप्राइजिंग प्रोफेसर धर्मसिद्धि ने जी, डॉक्टर मोहित प्रकाश काका ने जी को बहुत सपोर्ट किया इन्होंने सर। तो विश्वजीत बेटा जीत के बाद श्री खोजन, ये सभी विद्यार्थी कृपया मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय जी से अपना निकल जाइए। उत्तम जी, उत्तम नेगी जी, जाने बड़े होना है, काम किया है, के बाद बलजीत डायरेक्टर साहब। हेलो हेलो, वीसी साहब हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। वीसी साहब बोल रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा 1 मिनट हम बात कर सकते हैं? मंत्री जी से करना चाहेंगे, मंत्री जी से बात करना चाहेंगे। हेलो, वीडियो बंद है, वहाँ वीडियो बंद है। मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी, नमस्कार सर, नेगी साहब नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।
मेरे साथ सर रजिस्ट्रार साहब हमारे ज्ञान सागर नेगी जी भी है सर। वी अच्छा बोथ जी। आर, हम दोनों जुड़े हुए हैं। और अ, जिस तरीके से टाइटल रखा था उत्तम नेगी जी ने इस कॉन्फ्रेंस का, कम्युनिटी कस्टम एंड कंजर्वेशन, वो आपने भी जस्टिफाई किया द वे जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया। और मैं तो इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहा है, जिस तरीके से इस आपदा में आपने जो 9 दिन भरमौर में बताया है, वो हमारा कल्चर है, वो हमारा कस्टम है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। और आपने पिछले जब 23rd में भी कुल्लू मनाली में आया था, उस दौरान भी आप शायद फ्रंट पर थे आप। एंड तो इस बात को, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मैंने जैसे इनॉग्रेशन किया था इस कॉन्फ्रेंस का, जिस तरीके से टाइटल रखा गया है कॉन्फ्रेंस का, कम्युनिटी टू कंजर्वेशन इंक्लूडिंग कस्टम, ये बहुत अच्छा टाइटल था। और इसमें जिस तरीके से डॉक्टर उत्तम नेगी ने और इनकी इंटायर टीम ने, पूरे कॉलेज के परिवार ने जिस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, माई सेल्फ एंड रजिस्ट्रार साहब, वी आर बोथ प्राउड ऑफ यू उत्तम नेगी जी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे मंत्री जी का, जगत नेगी जी का। आना मुझे फिजिकली था सर, किसी कारणवश हम आ नहीं सके। और मैं आपके माध्यम से सर बताना चाहता हूं मंत्री जी के महोदय के समक्ष, हम सर डिफेंस के साथ एमओयू करने जा रहे हैं। जो पू एरिया जहां पर जो है हमारा डिफेंस का जो ब्रिगेड बैठती है, उनके साथ हम एक एमओयू करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो भोटी लैंग्वेज है, आपके दिशा अनुसार हमने भोटी का शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी में, तो उसके ऊपर भी हमारा एमओयू हो रहा है डिफेंस के साथ। और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इंटायर किन्नौर एरिया में, जो चाइना बॉर्डर के पास, उसमें हमारा लखनऊ में एमओयू होने जा रहा है। तो उस दिशा में मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि जो रेकोंग पीओ है, ये जो कॉलेज होगा, ये हमारा पायलट कॉलेज होगा। कल हमारा अर्नेट इंडिया की तरफ से, अर्नेट इंडिया की तरफ से एक एमओयू हुआ है, उसमें भी हम, क्योंकि अर्नेट इंडिया ने काफी वर्क किया ट्राइबल एरिया में कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें उस दिशा में, और साथ में जो ग्रीन एनर्जी का हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी का, चाहे वो सोलर है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे दूसरे दूसरे साधन है, उसमें भी हम जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर उन सेंटरों के माध्यम से हम कॉलेज लेवल तक पहुंचना चाह रहे हैं। इवन हम तो एक स्टेप और आगे जाना चाह रहे हैं, स्कूल लेवल तक जाना चाह रहे हैं। उस दिशा में हम कोर्स करिकुलम बना रहे हैं। और मैं आशा करता हूं सर कि जो 5 सेंटर हमने खोले हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें अप्रूवल आ गई है, स्टेट गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी हमारे R&D को अप्रूवल दे दी है। और हमारा नॉर्वे, जो वर्ल्ड की टॉप एजेंसी है, नॉर्वे के साथ एमओयू हो गया है, इटली यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू हो गया है, जो कि डिजास्टर के एरिया में लीडिंग इंस्टीट्यूट है। और साथ ही हमारा एक इंडियन नॉलेज सिस्टम भी हमने यहाँ पर सेंटर खोला है। और पहाड़ी कल्चर, जो पहाड़ी कल्चर है, उसको भी हमने खोला है सेंटर को। और साइबर सिक्योरिटी जैसे कल एमओयू हुआ है। तो ये जो 5 सेंटर है, मैंने हर एक प्लेटफॉर्म में ये कहा है, ये यूनिवर्सिटी के नहीं है, ये कॉलेज के भी है, ये सारे हिमाचल के हैं, हायर एजुकेशन के ये 5 सेंटर होंगे। इसके तहत हम स्कूल लेवल तक जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं सर कि हमने अब कॉलेज के लोगों को भी पीएचडी में गाइड देना शुरू कर देंगे सर आने वाले समय में। और ये बड़ी डिमांड थी कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल्स की और फैकल्टी मेंबर की, कि इनको भी अलॉट होने चाहिए गाइड, वो भी हम करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे फैकल्टी मेंबर जो पीएचडी करना चाहते हैं, वो प्राइवेट में ना जाए, हम चाहते हैं कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में ही रहे। और मैं तो ये मानता हूं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक ही एंटिटी होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा सर जिस तरीके से आपने जो वक्तव्य दिया, और इस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो आपने बात रखी, कम्युनिटी टू कंजर्वेशन, उस दिशा में। और दूसरा सर, मेरा जो कंसर्न है, मैं इसको फील भी करता हूं, आपने भी ये महसूस किया होगा कि जिस तरीके से 4-5 साल में मॉनसून अब किन्नौर में भी एंटर कर रहा है, वहां भी क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। तो हमने यहाँ पर एक डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, हमारे डिजास्टर की टीम ऑलरेडी वर्क कर रही है कि किन्नौर एरिया में, लाहौल स्पीति में मॉनसून क्यों एंटर कर रहा है। जनरली बरसात नहीं हुआ करती थी किन्नौर में, वहां बर्फ ही पड़ा करती थी।
तो ये चिंता का विषय है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्या कारण है, इस दिशा में भी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं बहुत सारी फंडिंग वेरियस एजेंसी के साथ। तो मैं आपको अश्योर करता हूं सर, आने वाले समय में हम 5-6 महीने में पोजीशन में होंगे कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप कर सकें कि किस किस एरिया में क्लाउड बर्स्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ज्यादा ना कहता हुआ पुनः मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर, क्योंकि आप इस कॉन्फ्रेंस में आए, आपने शोभा बढ़ाई, और जिस तरीके से मैं और ज्ञान सागर नेगी जी अच्छी तरीके से आपकी टॉक सुन रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से मैडम नेगी इलाहाबाद से आई है, इनकी टॉक भी बहुत अच्छी थी। सो बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर उत्तम नेगी और एंटायर कॉलेज की टीम, और पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर जगत नेगी जी। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए सर, हम आपके साथ है। हायर एजुकेशन में जो भी हमारी तरफ से होगा, हम आपके दिशा अनुसार काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। सर ज्ञान सागर नेगी जी भी कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं सर, रजिस्ट्रार साहब। हाँ बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू। बस मैं तो थैंक्स करना चाह रहा था, आई वाज आपका प्रोसीडिंग चल रहा था। थैंक यू। मैं कितनी देर से सोना धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। कितने आ सकते हैं? कौन है? आयो विश्वजीत फोटो जी हो गया, गुड, बहुत अच्छा काम था। क्या Be prepared for distribution of certificates. And you know that some of our participants are keen enough to depart in their respective states. Prepared. Private distribution certificates that are इसके पास यहाँ पे क्या डिलीट कर दिया? अभी तो डिस्कशन कर रहे हैं।
Reckong, Associate Professor of PSRD School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Delegate upon the topic consequences of changes in the Himalayan cryosphere. Calling Professor Milap Chand Sharma ji for getting late to introduce you and to arrange your keynote address. This Honorable Minister, chief guest of the closing ceremony, he was about to go. वजह से हम आपका नहीं कर पाए. Please, if you could hear me, please continue, sir, with your deliberations. Namaskar. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Sat Sri Akal, from Delhi. Delhi is warm today, and we are enjoying the warmth after the retreat of the monsoons. And today, I would like to speak on a topic that I have been working for over 40 years now. It's cryosphere, Himalayan cryosphere. I started as a student, and I continue learning new things about it. So we start with, I think this is visible. The slide is visible. Hello. Carry on. Slide visible है आपको? Yeah, of course. Please carry on. Okay, let me just put it on the full screen mode. Okay, the consequences of changes in the Himalayan cryosphere. Now, if you look at what is seen here, is the consequence of changing cryosphere. This area was occupied by glacier once upon a time, but once upon a time is much earlier than the human history that we have of the Himalayas. 50,000 years ago, a huge glacier used to go there, and because the glacier melted, there was recession, there was climate change, so the pressure release resulted into remodification of the slopes, creating such a beautiful landscape where the fossil landscape are still there, telling us that the processes which happened once will keep it for you to look at. So this is a rock glacier on the National Highway 21. Earlier it was 21. Now I think it has been changed to some other number. What I'm going to talk about, how altitudinally these are organized, how altitudinally things are happening, and what consequences we would have. I was just listening to the Vice Chancellor of Himachal Pradesh Universities talking about, the monsoon, how it is changing into Spiti and Laos, Spiti and Kinnaur. So I'll also talk about a little bit about it. But what happens is we have a large reservoir of fresh water in the Himalayas. And if, given the trend that we are looking at, I'll show you the data, if this trend continues, that how fast we are going to lose this resource and what would be the consequence of losing this resource, really. Which are the areas facing disastrous consequences? Kinnaur, Laos, Spiti, Ladakh, Zanskar. That is the area that we are focusing on in terms of looking at these changes. We do have areas, upper Sikkim, upper Sikkim area also we are looking at. And similarly, if you look at these areas, Upper Kinnaur, Spiti, Lahul, water deficit areas, and all economy is based on irrigation. We have to irrigate to get the crops. So seasonal control is also there. And also, the environmental lapse rate, do we need to have recalibration of the environmental lapse rate, which is 1.6 degrees per 1,000 meters. So
what has happened in recent years because of the warming, the global warming, even this altitudinal changes have, taken place in terms of warming up of the atmosphere, the lower atmosphere. So this warming up of the lower atmosphere is leading to the pressure on the resources that we say is water resources, fresh water resources, cryosphere, and I'll show you how on ground it looks like how fast it's changing, and if it continues, at the same rate, at the same trend for another 50 years, we will have disastrous consequences. So the impact of the changes on ground, if you look at, as I said, Ladakh, yes, our minister just talked about Ladakh, and we staying away from their protest, which was late to Delhi march. We didn't participate, unfortunately. We didn't realize what is really happening to these areas and how this was important of, this climate walk of Sonam Wangchuk was important, is important for us also, equally important for us also. Now, if you look at here, in last 2 decades, what we are seeing is just the changes, and the negative changes. We are just losing, our glaciers, which are visible, but there are areas which are not visible. Subsurface frozen ground is also getting affected. So consequences of that I will also show. Now here, 2 red lines that I have drawn here, Bias Basin and Yamuna Basin. Both these are south-facing basins, and these have faster changes as compared to rest of the basins that we have for Uttarakhand and Himachal. So we have done a minute study of all these glaciers for last 2 decades. Now, this was measuring the glacier ice in the field. So this is 2017. If you look at this distance between this ice and this boulder, I put this yellow line, and I put this round circle around one of the boulders. Now, this is our team working on the glacier. This is accumulation area from where the glacier grows. If accumulation area is accumulation is negative, then the glacier starts dying down. So by 2025, we just recently went, and this is the distance that we are looking at. This is what we have lost in 7 years, and that red one, this red boulder that you see, this red boulder is here now. So in the accumulation area also, there's large changes. If you look at the profile here, the ice was there, ice is gone here. So ground zero, we are just losing ice like anything. And then, as I said, this has to be looked at in terms of lower atmosphere warming. So warmth is getting up, higher up, and that is the reason why our monsoons are getting, to areas which were rain shadow areas earlier, Laos, Spiti, Kinnaur, and this year it was Tibet also. Tibet also is getting this summer we had a lot of rains in Tibet also. Now, if you extend the years of investigation, get into 1965, these are based on the practical images on the ground. So since 65, we are just losing and losing. So in the frontal area, if you see this much of loss, on the surface, you are seeing this much of loss. In the frontal area, this much of. So the trend is negative. It's slightly threatening, but we can't do anything. Now, areas like Ladakh or the water deficit areas, if you look at this Puche Glacier, which used to be large once upon a time. So once upon a time means 125,000 years ago. So we updated that also. Now, this Puche is now a square kilometer, and it feeds into Leh town. People who have been to Leh, they must have seen that
it has expanded, it has exploded in terms of its development. It is becoming larger. So this area they are developing as the reservoir, water reservoir from Puche Glacier. So 1 square kilometer, if present trend continues, as I said, this is also going to go very fast. So with the loss of ice, we are also having the lakes developing. These lakes are becoming very, very dangerous. If you look at here, this glacier is melting and the lakes are becoming larger. So any breach will destroy these villages downstream. So downstream villages, I'll show you, this has become a tourist village of Sisu. So this village is going to be affected. But at the same time, if you look at, reservoir, as Sonam Wangchuk has come up with the artificial glaciers, nature has left its own glaciers. The mechanism of frozen streams, upstreams, and seasonally they melt to give waters to the ground. As I said, it's not just the surface, it's the subsurface which is melting. So if subsurface melts, our spring waters which feed us, our families, are going to go. So this is very important for us to look at how we have contributed as animals to change the climate. Now, here here's one of the villages which have been talked about is Lindur. This entire village is sinking. Now, this village was, this is old landslide which was taken up by the society, by the villagers long time ago. But with the change in temperature, the permafrost underneath, as I show you this is resulting this village to slide down. So this has become a hot issue. If you see this frontal area, most of the time, it is in the newspapers, Himachal newspapers, and this is how they are losing their orchards also. This is because it's sliding, it's slipping down. So people are worried, but it is climate induced. So higher areas are also getting affected because of the altitudinal changes in temperature. And if you see the melt waters of the subsurface ice, it is coming out here. So you know what is really happening. And with the changes in climate, as glaciers melt fast, so villages like this village in Mayar, this is again threatened. So this year, the government had again gone to our representatives had gone to this village to see it. This debris flow can destroy this village anytime. Now, we have historical evidences in the historical geological history, historical evidences. This is Darcha, Sumdo. Entire slope had failed, but that failure was because of the nature, because of the glaciers. When the glaciers, some 40,000 years ago, glaciers had retreated, so pressure release had led to this kind of slopes. As I said, this village, Sisu, sorry, wrongly placed here. This glacier is melting fast, lake is becoming larger, inundation will lead to two of these villages getting affected in the near future. This is the downstream, this is the area of the village which is going to get affected. So at the same time, if you look at, these are unconsolidated material. If there is a change in the river, channel, it cuts down the slope here, the top slope, this entire slope is going to fall into the river. So these are highly sensitive areas where if you construct the roads, this is going to come down. If there is a change in the river channel, again, the erosion will lead it to collapse. But for us, for Kinnaur, for Laol Spiti, and for Ladakh, variability in climatic parameters, the off-season snowfalls, off-season rainfall is very dangerous. Our crops will be finished, the communication will be finished. This is, I think, 22nd, 23rd
of September 2018 in Lahul. We had snowfall, so all the vegetation, all the crop, the tree crop was destroyed. At the end, we in Kinnaur, we in Lahul, we pray to God that there's God up there to save us, but we have to behave, we have to change our lifestyle in order to save us for the future. Thank you very much. If you have any questions, I'm open to answer, because all that I have presented to you has been funded by the taxpayers' money. The government of India has funded me to look into these aspects, go into the field, measure it, and bring it to you. Thank you. Thank you, sir. Questions, if you have any? Sir, we have a question for you, sir. Yes. So good morning. Yes. So very pleasure to hear about the cryosphere of Himalaya. And sir, I also belong to this area, so I'm also concerned about the declining smoke cover. Sir, I have a question. So tourism has increased in our area, like in Kinnaur and Laos area, and as a consequence, the inflow of vehicle is also increased, right? And tourism has increased, and the local we use vehicle and the tourism also. Does it contribute to the decline in the snow cover? I think it is there, but how much impact does it have? And should we come up with any other alternatives so that we could lesser the passage of vehicles in our desert area, and we can have some alternative options like some outside before entering the desert area, they should have some parking area. We should not allow the outside. Sure, I agree with you. I was suggesting that the government should come up with this, green fuel buses, smaller buses. If tourists are coming, let them come up to Rampur. And from there, the government of Himachal Pradesh has these green fuel, small, beautiful buses like Switzerland, and that transport people to Kinnaur or Spiti. Similarly, from Manali onwards, there should be, the government should introduce these green fuel small buses with, beautiful glasses so people can look out and bring them back. Because the number of vehicles also create more of the dust particulates which are reaching glaciers. We have analyzed that. The glaciers are getting fine dust particulates, which normally it's not just the black carbon, but also black carbon reaches the glaciers now. It is reaching the accumulation area, so it is affecting the glaciers to grow. It is affecting the glaciers to melt faster. Now, fine dust can also reach there. You, Dr. Sharmaji, for your insightful deliberations. May I now invite on stage Dr. Binesh Bhatia, Assistant Professor of Defense Studies, Devvati Nandan Bahuguna, Central University of Garhwal, Uttarakhand. Deliberate upon his topic. At the very outset, I'm very grateful to the and the organizing committee made all the efforts. I feel here. Since the international conference belongs to very enlightening topic, the community culture and conservation. The path of sustainable prosperity is organized by KSV, Government College, along with the district administration. Today I'm here to talk about my ongoing research, Ganga ecology.
which navigates the climate change and the environment sustainability. So briefly, I would like to tell you that this project is basically led by two stakeholders, our university. Along with that, the ARF, the Amritagiri Himalaya Research Foundation, which is consistently working upon the Ganga River, which is towards its sustainability, more focused upon the sustainable practices which can be taken care by the community stakeholders, from takers, so that the Uttarakhand, which is observing a very, you can say, in a crisis, start from the Nadi, if you are aware of the Nadi in the Uttarakhand, which flooded the flash flood. They had a lot of infrastructure damage. But if we talk about the damage, so damage is not more or less only about the infrastructure. It is something in the various things which, as a human being, constructed the illegal construction across the river beds, which we have observed in the Dharamvi. So similarly, in the Himachal also we have witnessed many floods and other issues which are directly linked to the climate change. We are consistently observing the floods and the these things are happening just for the climate change of the global warming. And in our research, I will be deliberating upon the three states which we have discussed: the Himachal, Uttarakhand, and as well as the first levels. Yes. So here you can see the tributaries of the Ganga. The tributaries, if we talk about the river Ganga, you will be finding here about 200 rivers which actually contribute to make it go from the right from the Gomok to the last point to the Bay of Bengal. So here you can see the Badrinath, Kedarnath, Gangotri, and Yamunotri. So these four points from where we have origin, which is directly linked to the flow of river. So in my pilot study, I visited the Panch Prayags. As you can see, the Vishnu Prayag is at the top where the Adiganda actually joins the Vishnu Prayag and then followed by the Nand Prayag. Is the major Alaknanda point from where Alaknanda and another river joins. Next Prayag, which is the current Prayag, followed by the Nand Prayag. And from the Dev Prayag, we actually get to know that the river Ganga is named as a Ganga. For that, there are different names of it, but after Dev Prayag, we get that Bhagirathi Alaknanda meet and make it a Ganga, which goes towards plains by the sea and still goes towards. In this study, we have observed that across in the Panch Prayag, there are many complications. Like this is the Vishnu Prayag, which is in the top. The rivers you can see, the Alaknanda is coming from the one end, and another one is your Dhaliganga. It's literally like a milk. When you see it, I don't have a video here, but as you can see, one of them is tributary, which is running the Alaknanda is the Dhaliganga. This is the Nand Prayag, as you can see. This one. Yes, this one. See the volume of rivulets. Volume of river at Alaknanda joining and the Nand Prayag is very less. Next is the current Prayag. This is beginning of two rivers where Alaknanda is joined at the current. This is the Rudra Prayag region where Alaknanda joins by the another river and the Dev Prayag. Where two, which one is from the Bhagirathi, which is starting from the Gangotri. About the Gangotri glacier, it is situated in the
This is the, as you can see on the screen, this is Bhagirathi glaciers. One is the, there are 3 points. There are 3 points. One more. One more. Bhagirathi 1, 2, 3. You can see the Bhagirathi, there are 3 glaciers, namely Bhagirathi 1, 2, and 3. From here, the Ganga originates and contributes to the Bhagirathi. The next one, this is the, that it is located at the Kapur, is above the Gangotri. And this is the Gomu, currently situated at very, where you can see the issues are on daily basis is melting at a very last. And let me tell you, when I talk to the native people there who are, they said that around 2 to 5 kilometers stretch the glaciers have them. And it is the speed at which the glaciers are melting. And they are saying within the 5 to 10 years it will be possibility that one will be able to get and this you can see the in between the mountains, this is glaciers. You can't imagine that in the climate change and the outwards, these glaciers have been turned into black. And because of period of time, these glaciers are melting at such a fast way that we are not able to distinguish these after 5 to 10 years. That this won't be able to. So in my conclusion, I will say that if climate change is impacting us, and moreover, the sustainable practices which counters the, you can say, the global warming on a global stage, that is very important. If we don't focus upon that with the community stakeholders, whether they are scholars or the policy makers, we might have to so that we can actually sustain the climate change which is going on. Thank you, Vinesh Bhatia, for your elaborative discussion on the topic. During this international conference, our college also organized an essay writing competition. The members of jury are Dr. Vinesh Bhatia, Assistant Professor of Defense Studies from HNP Central University of Garhwal, and Dr. Deepika Bhandari, Assistant Professor in Department of Forensic Science, Madhya Pradesh University, Shimla. I now invite our college principal, Dr. to facilitate Professor Deepika Bhandari, जोरदार तालियां मैम के लिए इन्होंने रिजल्ट किया है, लैंग्वेज किया है, स्कीम किया है, जो विनर है हमारे मेरा नेक्स्ट इनवाइट विनेश भाटिया की फैसिलिटेटेड बाय आवर कॉलेज प्रिंसिपल और आए हमारे मैं नाउ request Dr. Deepika Bhandari to announce the winners of this essay writing competition. Ma'am, please.
A very good afternoon to all present here. First of all, I would like to thank our principal of Thakur Negi College, Professor Uttam Chandji, for inviting us and other organizing members. So thank you again. I was given the chance to judge for the essay writing competition. So I take some names which other judges have also decided unanimously. So the first name is Miss Vishakha from Nursing College, IGNC. Second is Lija Sarkar from Department of Forensic Science, HP University. Third is Uday from Shulini University. Fourth is Shabnam from Center of Excellence Government Degree College, Sanjoli, Shimla again. One last but not the least, it's Muskan from NSCBM GDC Hamidpur. These five were from UG and PG, and we have two more prizes for the school category. One is Deeksha from Shimla Public School, Shimla, and another is Wilson Sarkate from Monal Public School, Shimla. Thank you so much. For the commencement of this three-day international conference. And the winner of this poster making competition, first position holder is Mr. Sujit, the student of BSc final. He got the first position. He will be Sujit. Given away by Mr. G.P. Golda. And eminent technician and social worker of district Europe, Mr. Sujit. जोरदार तालियां सुजीत के लिए. And the second prize is backed by Miss Neha, for student of the final year. It will also be honored. Neha, please. Neha is there. Second prize winner of poster making competition. And then ऐसे राइटिंग कंपटीशन के भी करवाया था हमने कॉलेज लेवल का जो हुआ था उसमें दो विद्यार्थी हैं कोई आई रिपोर्ट है तो उनको बाद में दिया जाएगा सर नोटेबल वॉलंटियर्स हैं हमारे एनएसएस के जिन्होंने बेहतरीन भूमिका निभाई है इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में नोटेबल वॉलंटियर्स ऑफ एनएसएस NSS के volunteers
एनएसएस के वॉलंटियर्स, आचार्य डी गोलदार सर और हमारे बीएस प्रोफेसर बीएस नेगी सर के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हुए और एनसीसी के कैडेट्स भी हैं। ये बच्चे एनएसएस वाले कहाँ, एनसीसी के कैडेट्स पोस्टल पोस्टल गर्ल्स पोस्टल गर्ल्स Postal girls are requested to come on stage to receive a token of remembrance from our distinguished. Thank you, sir. Culture. Please come and कोशिश करने के लिए कल्चरल टीम के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। हमारे जो टेक्निकल फोर्स स्टाफ में नोटेबल वॉलंटियर्स थे, बलजीत के बाद सुमित, बलजीत is here. Please come and receive your award of appreciation from our college principals. Balaji is followed by Miss Sumit. Mr. Sumit. Principal Government College Sussex Nagar. हमारे नोटेबल टेक्निकल स्पोर्ट्स स्टाफ के वॉलंटियर्स को सम्मानित करते हुए Sumit is here. Welcome and congratulations, Beta, for your fine cooperation, sport. Sumit के बाद आंचल, इस ये फर्स्ट सेमेस्टर आंचल also here. और ये भी विश्वजीत, ओजस्वी खोजन, रिया, अगर इनका छूट गया है मॉर्निंग सेशन में। Thank you, Dr. Poonam Mehta, ma'am. This is the prize distribution ceremony. Let me request our college principal, Dr. Uttam Chauhan, to give away certificates to esteemed participants of this 3-day international conference. Dr. Devraj Negi is requested to submit me the list of these participants whose certificates have been flying board वाले. May I now call on stage Dr. Poonam Mehta, one of our worthy keynote speakers, special guest, and Principal Government College, Nagar, to receive her certificate and लेकर बहुत शानदार विषय पर अपने विचार प्रकट किए थे। सम्मानित करते हुए आचार्य डॉक्टर चौहान जी।
Dr. Puna Mehta ji, Principal Government College, Government College, Sarpati Nagar. Next is Professor Jared Devi, Associate Professor of Sociology, Government College, Compio. Please find the body by distribution ceremony. Tushar Chand Sharma, Assistant Professor of Mathematics, PS Navy Government College, Compio. Now, America's from Manchester Challenge. Next. Also, the consignee, when we get and concentration of focus on the data cable was. That will be the question. Professor Department of Political Science. Empowerment to Manrega in Madhya Pradesh. Our organizing secretary, Professor Dharamkirti Negi. And the Military Singh Saini, Professor of Political Science. Requested to receive his certificate, he is not here. Professor Nitin Nargu, Assistant Professor of Physical Education. A key member of our college team, very dynamic and dedicated person. Congratulations, sir. दो तीन दिन बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। थैंक यू सर। डॉक्टर शांता कुमार, key member of organizing team, Professor of History. Next one is again one of the key members of our organizing committee, Dr. Mani Prakash, Department of Commerce. Dr. Sri Jetwari Rampur, she is not here, I think. Next one. Mr. Anil Nevi, Professor of Chemistry. Next one. Professor Devraj Nevi, Department of Commerce, TS Navy Government College, Compio. Okay. Yes. May I next invite Professor Yusuf Nevi, Department of Chemistry, to receive his certificate from our college principal. Mr. Narinder Singh Saini, Department of Political Science. Thank you. Dr. Sher Singh Negi, Department of हमारे टेक्निकल कमेटी के कन्वीनर भी हैं, इनका सराहनीय भूमिका रही है। मैनी कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर शेर सिंह नेगी सर। मिस्टर इंद्र भट्ट नेगी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, योर कंट्रीब्यूशन इज वैल्यूएबल एंड मैनेज कर बहुत बढ़िया ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब जूम मीट के द्वारा जो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को शानदार बनाया है। थैंक यू सर। मिस्टर अभिषेक ठाकुर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री।
Madam and Sigoshi ma'am, you are requested to come on stage. Mr. Abhishek Thakur, Department of Sir. Abhishek, Department of Physics. Balav Neghi, Department of Hindi. Siddheshwari Yambo, Department of Sanskrit. Thakur Neghi, Government College, Bombay. Department of Chemistry, DSW Government College, Bombay. Also, the convener of report writing committee. Congratulations, Ajla ma'am. Jyoti Sharma, Department of History. Please from Q. ज्योति मैम के बाद इस संस्कार पर भी ध्यान है ज्योति शर्मा द्वारा करने के लिए ये संस्कार सर रिपोर्ट राइटिंग कमेटी का हिस्सा है और ये हमारे कॉलेज के फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मीडिया प्रेस और मीडिया कमेटी के भी अहम सदस्य हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर डॉक्टर यशवंत राणा डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी हमारे टेक्निकल कमेटी के अहम सदस्य हैं श्री कुल्लू से ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर शीला कुमारी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक शीला कुमारी के बाद मिस सुरबाला नेगी मेरे अंग्रेजी विभाग से संबंध रखती हैं बहुत ही डायनामिक प्रॉमिसिंग पॉलिसी डॉक्टर शीला नेगी मैम बहुत बहुत बधाई आपको आपने कल जो कल्चरल इवनिंग में जो शानदार प्रस्तुति दी है शीला मैम सुरबाला नेगी शिवांगिनी नेगी एप्लीकेशन शिवांगिनी मैम के बाद जय प्रदा मैम भी जय प्रदा मैडम हमारे कॉलेज के जो ई न्यूज लेटर है समिति सुरेली उसकी टेक्निकल स्टाफ की मेंबर हैं और बहुत बेहतरीन भूमिका कर रही हैं इट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट अंडर we have started e-newsletter. Hindi is synonymous for the river Satluj and swimming means waves, currents of Satluj river. आप हमारे कॉलेज की वेबसाइट को फॉलो करें फेसबुक पे जो फॉलो करें वहां आप देख सकते हैं हमारी ई न्यूज लेटर को नेक्स्ट इज विनोद कुमार लाइब्रेरियन ऑफ आवर कॉलेज कन्वीनर भी है और लाइब्रेरी में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं लाइब्रेरी का टाइम सर सुबह 7 बजे से सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी हमारे कॉलेज में शिफ्ट हो गई है तो आप सारे विद्यार्थी वहाँ पढ़ सकते हैं तो विनोद नेगी जी नागपुर से ताल्लुक रखते हैं सर और उसके बाद मैं कॉल ऑन स्टेज डॉक्टर कृष्ण कुमार नेगी Department of Commerce, Government College, Rampur, Chair. For this celebration of third paper of graduation, he was the former colleague arts in this college, very dynamic person, dedicated scholar. जोरदार तालियां सर के लिए डॉक्टर दिया भट्टी came
फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर बुशहर, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी स्थिति के शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत बधाई आपको। श्री डॉक्टर जीरा भक्ति, I call upon Dr. Savita Kumari, Department of Geography, Government College Rampur बुशहर। Dr. Bala is here. Dr. Savita Kumari comes from Ravi village of district Kinnaur and presently serving at GDC Rampur. Professor Ranju Bala, Journalism and Marketing, Tourism and Travel Management, Government College Rampur बुशहर। थोड़ा तालियां नाम के लिए भी। Priti Saryan, and founder Saryan विज्ञान फाउंडेशन की ओर, उनकी तरफ से हमारे प्रोफेसर धर्मपति ने भी और प्रमिति ने भी, जो भी फाउंडर जैक की है, GDC है, और प्रोफेसर अनिल कश्यप GDC रामपुर तैयार है। धर्मपति ने भी सर, मैम प्रीति सरयान और प्रमिति ने भी का उसका सर्टिफिकेट लेते हुए, थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट इनवाइट प्रोफेसर अनिल कश्यप फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर बुशहर। बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया सर, आप इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में हिस्सा बने, शोभा बढ़ाई। स्कॉलर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर ब्रिजेश सिंह चौहान, हमारे की नोट स्पीकर सर, प्लीज हमारे की नोट स्पीकर स्पेशल गेस्ट और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में बड़ी बेहतरीन भूमिका निभाई डायनामिक पर्सनालिटी है की। तो गीता ने भी एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, who delivered a very interesting, amazing and fascinating presentation today. Dinesh Bhatia, Assistant Professor of Defense Studies, HNB, Central University of Ireland. Deepika Bhandari, Assistant Professor of Forensic Science of Himachal Pradesh University. Deepika Bhandari, बहुत बहुत बधाई मैम आपको। सूरज गर्ग, रिसर्च स्कॉलर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। भावना शर्मा, रिसर्च स्कॉलर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। मिस भावना शर्मा। Thank you, sir. Thank you, principal sir. Lady ma'am, Dr. Rajesh Maan sir. Next sir. मोदी जी और सम्मानित अतिथियों को बताना चाहता हूँ कि सर हमारे कॉलेज में लिटरेरी क्लास चाह में एक भाषण प्रतियोगिता करवाई थी, जो स्कूल लेवल जो हमारे अड़तीस स्कूल हैं, हमने 10 स्कूल टॉप किए हैं डिस्ट्रिक्ट की ओर के। तो एक हमने वहां पर डेक्लरेशन कॉन्टेस्ट करवाया था, भाषण प्रतियोगिता करवाई थी, जिसके विनर्स हैं
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बड़ी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ी की कल्पना इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। और देवी चंडिका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठी की छात्रा नवनिशा ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था। ये हमारे बीच है नहीं, दोनों छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। मैं श्रीमान विद्यासागर नेगी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि इस क्लोजिंग सेरेमनी में अपने रिमार्क्स, अपना शुभ संदेश, आशीर्वाद देकर हम सभी को अनुमोदित करें। श्रीमान विद्यासागर नेगी जी। ठीक है। तो मैडम और यहाँ बहुत सारी जगह बस जितने भी जो यहाँ पे सारे जाना पड़ा, मुझे बहुत पसंद था। मैं बहुत भावुक भी हूँ, कोई मानना क्या किया कि जो है या गेट टुगेदर पूरे टीम और उसमें गवर्नर साहब और गवर्नर साहब को बुलाया तो उससे पहले इसके असल में कुछ कॉलेजों को उन्होंने मांग की थी कि सरकार करे जो भी ठीक वही मौका हम लोगों ने मांग रखी और उस मांग में एक्सेप्ट और के साथ साथ एक शायद काम का वो था उसको हम उस समय उनके बाद में जो है को हो सकती उसके बाद जो है गुरु सिंह जी थे मुख्यमंत्री जी जो है यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स थे स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेज के मिले उन लोगों ने कहा कि आपने सब धार्मिक कॉलेज को भी बहुत जरूरत नहीं कितनी परेशानी होती बोल रहे थे। आप देखिए इस समय किस तरह कॉलेज किस तरह से हुआ को जरूरत है और वो तो जो है आप सभी जो यहाँ पे टीचर्स सोचा तो मैं आपको दिलाई देगा तो बता तो इस दूर दराज जैसे जिले में मानेगा और उसको जोड़ना अमेरिका जैसे है जो साथ और देश के कई स्कॉलर्स को आप करके और इस तरह का जो कि आज जब मॉडर्न जो है थोड़ी अलग से आता है ये आता है ये पंद्रह को इसका रूल इसका पूरी की का ठीक रुपए का
हमको बात एक जो है जो राइट करना, राइट करने तो एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में जो है ये बात ये जो है ये मेरा है लोग आम भाषा सिलेबस में क्या एशियन इंडियन बिजनेस इस तरह से कई चीजें हैं जो है उसमें उसमें आ रहा है और आप सभी लोग जो है जिस तरह से दूर दराज एरिया में आए एक मेरा एक मित्र ने कि कई बार क्या होता है कि हम लोग एक अपने अपने अलग अलग कल्चर होते हैं अपने अलग अलग कल्चर के अलग अलग मापदंड कि अच्छा है तो जब हम लोग किस जगह पर जाते हैं फिर इंडिया में जाते हैं तो हम लोग अपना जो अपने क्षेत्र का अपने वहाँ के जो मापदंड हम रखेंगे तो हटा करके एक बिल्कुल एक खुशी है तो क्या होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम उस पर आकलन करें वो सही नहीं आता बिल्कुल खाली दिमाग से आप जो समझना चाहिए क्योंकि वो अलग अलग है वहाँ के मापदंड अलग होते हैं वहाँ की परंपराएं अलग होती है वहाँ की दूसरे की बातें तो उन सबको उसी हिसाब से समझना तभी जाकर के हम उसकी और पूरा हम समझ और दूसरी बात ये कि यहाँ जो एक मैडम ने कहा बहुत बढ़िया लगा मेरे को जो है क्या अच्छा गीता गीता बोलना ये बोली कि आप तो यही क्या ना अच्छा तो ये पहली बात इस तरह से कहता आपको ये शायद आपने देखा क्या नहीं देखा पता नहीं मोहनदास जी ने जो पहली किताब आई वो सब चीजों को जिस तरह से यहाँ पे लोकल उसमें जो है वो जो रिजर्वेशन होता है सारी चीजों की उस पर काम किया और बेहद किताब कर रही थी वो छात्रों की क्या थी हम उनकी किताब आ गई तो मुझे एक साल उसमें लग जाता एक साल हो रहा है उस किताब को ढूंढने में नजर रुके इतना मुझे अच्छा लगा वो स्थानीय आदमी उस स्थानीय क्रम को यूज कर रहा है स्थानीय परंपरा उसमें कहीं कोई नहीं है अपनी जो परंपरा में जो चीजें होती है उसी को क्या है उसको इसी तरह से करनी शब्द नहीं शब्द जो है शब्द आ जाते हैं शब्द जो है किसी दूसरा दूसरे शब्द लगा लेते हैं और उससे उसका पूरा जो उसकी पीछे की जो मान्यता है उसका कॉन्सेप्ट वही स्टोर हो जाता है तो शब्दों को भी रखना जरूरी है आ रहे हो शब्द का देखना पड़ेगा आपको ये है कि कोई शब्द आता है बाहर से अब हम एक शब्द आपको बता एक शब्द आया है हमारे अक्षर में बोलते हैं आप हमें शरण बोलते हैं कईयों को पूछा शरण होता क्या है ये कहाँ से आए शब्द सब में था यार घास मेरा रखने के लिए पशु मेरा रखने के लिए इसको शरण में ये तो यूजलेस होता है हम ये बताएंगे कि शरण शब्द कहाँ से आया बहुत साल तक चला बहुत साल तक महसूस हो कहाँ से आया एक बार मैं शेपर्स पर काम कर रहा था मुझे पुस्तक जो है ये जो शेपर्स पर मैंने लिखा है जीरो के शेपर्स उस पर जब मैं काम कर रहा था तो मैं रामपुर के एरिया में रामपुर के एरिया में कुछ महिलाएं आई साथ में उस एरिया की उन्होंने कहा जा रहा हूँ मैं तो फिर हम तो क्यों हुआ ठीक है मुझे कुछ महिलाएं उसने मुझे तीन साल बताएंगे मैंने उनको कहा कि शिवरंग सारे आप मेरे को शिको इनको तो कुछ रहेगा ये तो हमने जरूरी की किया पर जाकर जो भाव चला कि शब्द वहां पे शरण शरण ऐसे करते हैं और शब्द संस्कृत शब्द जो है शरण से आया शरण तो इतना चला है हमें जो कि शब्द जो है जंगल हमने
इसको समझना पड़ेगा। तो उनको ही देखना होता है कि शब्दों की ज्यादा चलती, एक शब्द चलता है स्टैंडर्ड शब्द, स्टैंडर्ड से प्राकृत की तरफ जाता है, और एक चलता है प्राकृत से स्टैंडर्ड की। कोई समझना पड़ता है कि उसकी यात्रा बताता है, तो आगे उस शब्द रोका, और उसने कहा वहां से क्या लिया, तो जाकर के अद्भुत तक। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी कोई काम करें उस शब्द के ऊपर करें। अरे कोई क्या करके और उसकी समझ के पीछे अपनी मेहनत नहीं होती है, अच्छा दूसरे की मिल जाता है। जो है, क्या होता है, क्या है, बच्चा हमारे किसके लिए जुड़ गया, शब्द भी जुड़ जाता है। शब्द उसकी बात क्या है, एक आप सभी जो टीचर्स थे कि लोगों के अंदर अपनी जो भाषा है उस भाषा के प्रति जो है उनको जो है महसूस करा कि भाषा का कीमत क्या है। तो आप देखें कि जो भी देखो सिटी हिंदी बोले हुए हिंदी भाषा बोले हुए कुछ नहीं है, बनाना नहीं होगी। संस्कृति की क्या बात, संस्कृति तो जो है क्या जो है भाषा जो संस्कृति में सहमत उसके पूरे संस्कृति का प्रचार हो रहा है, संस्कृति का संरक्षण और भाषा जो छोटे से जो है श्रीमंत में जो कुलम है इसमें से सात हो गए अलग अलग विषय उसकी करती है। कई लोग भाषा को ऐसी एक जो की भाषा है तो दूसरे वाले उस तरह की जो है छोड़ देंगे अपने पंजाबी चिट्ठी है चिट्ठी है क्यों चिट्ठी ठीक है बोला वो तो है चिट्ठी कि खत्म अब एक भाषा चलेगी तो उसकी बहुत सारी परंपरा तो ये बात क्या है जब हम लोग जो टीचर होते हैं हम लोग जब जो है कि इतिहास वगैरह कुछ बातें होता है तब उसके कुछ बातों में संलग्न होता है। तो कई बार पिछले लेक्चर से पहले उसको जो है फेस्टिवल में जो छोटी सी बच्ची को जो है उसको उसने अच्छा लेक्चर दिया होगा कि उसे दोबारा उसको रिपीट कराएगा उसके बाद में हम पसंद है हमें गर्व है कि यहाँ पे जो है जहाँ पे जो है जहाँ जो ठाकुर पाले 200 साल तक जो उनका उस साल में जो 21 ठाकुर आप पता है पूरा की जमीन जो है 30 फुट होते हैं वो 7 फुट इसलिए तो उसमें 21 हुई उस समय जो है 21 जो है कई जो है हमारा जो है जो हुई है इस तरह से जो उसको जो है आगे का जो है
ये समझना है कि ये क्या बोल रहे उसका एक निकास हो उसके हमको उसको निकास में जाने क्या क्या कह रहे हैं हमको ये पता करना चाहिए कानून क्या है कि जिसका कोई उसके टैक्स है किससे इसमें उसको इसमें हमको ये बहुत है इसमें कानून कानून का शब्द है ऐसा कोई हमको नहीं इसमें हमारा नहीं अब सभी लोगों से और दूसरी बात लोगों को आपको भूलिएगी तो है आज तो हमने बनारस में था समझ है हमको क्या एक बार जो पुलिस की बात हुई एक पुलिस कॉन्सर्ट उस कॉन्सर्ट में हमारे लिए हम लोग नहीं जानते तो पुलिस मुताबिक तो से उन्होंने कहा मुझे पता कि हम ये करते हैं अच्छा ऐसा बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं तो सुनने को हेल्प नहीं करे ऐसा नहीं कि गुरु जी को उन्होंने कहा उससे बैठे और विद्यार्थी समझ तो उसका हेल्प भी हो गई हमने आज तो केवल विद्यार्थी साहब हार गए हमने लगे दोषी नहीं बन गया तब उन्होंने क्या सभी लोग जीतने करना शिष्य से संतान से जो इस तरह की मूल्य चाहिए कि टीचर है टीचर होने के नाते हमारा विद्यार्थी इतना होना चाहिए कि एक दिन हमारे जो है उसके स्टैंड आता है तो बिल्कुल घर होना चाहिए इस तरह से होना तो ये के लिए है हम लोग अपने एक नई समय को उसको तैयार करना पड़ेगा मेरे को ऐसा बहुत कुछ दिया गया है मैं आप सभी लोगों के पास आप लोगों ने सम्मानित किया और देखिए आप पहले बहुत आप तो एक कवि है एक राइटर इसे बेहद प्रसन्नता हुई एक प्रिंसिपल जो कवि की तरह है बात करी उसमें कवि को बोल रहे हैं आप सभी लोगों को हमको सम्मानित किया उत्तर गांधी जी को सम्मानित किया तो बाद में एक शब्द जरूर मैडम बहुत काम कर रही है मैडम सिद्धेश्वरी ये जो काम कर रही थी बहुत तकलीफ मुझे आता देखेंगे नदी से लेकर के पहाड़ पर्वत सभी पेड़ पौधा सभी ये जो पूरा जो दुनिया के उसको रिसर्च करके ला सके एक दुनिया की इन शब्दों के साथ धन्यवाद धन्यवाद विद्यासागर नेगी जी लोग जानते हैं कि विद्यासागर नेगी जी बहुत ही profound prolific writer हैं who more precisely writes about the ethnic perspectives of district tribal area. Thank you very much for sharing your opinion. The younger generation of district shall remain indebted to you for your kind contribution in the field of social service and shall remain indebted to you forever. Thank you, sir. Injustice if we do not recognize and appreciate the contribution of our technical board member, Mr. Gaurav Levy, who comes from Rawat village. I best yourself and
to present a token of remembrance to Mr. Bharat Negi, who comes from Raran village of district Kinor. He is a technical expert and he answer. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अथक प्रयासों के कारण ही हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में सचमुच इंटरनेशनल लेवल का स्वरूप दे सके हैं। विदेश के लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, के माध्यम से के माध्यम से थैंक यू वेरी मच सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। May I now invite on stage the convener, Dean of Friends Welfare, Professor Janak Negi, to propose a vote of thanks on the closing ceremony. please. For this teachers of the ceremony, in this 3-day international conference on community, culture and conservation, urban pathway to sustainable prosperity. Honorable Minister of Himachal Pradesh for Revenue, Agriculture and Tribal Development, Deputy Commissioner, Young Dr. Amit Kumar Sharma ji, and worthy Chief Guest of opening ceremony, Professor Mahavir Singh ji, for the Vice Chancellor of Himachal Pradesh University. Now, distinguished guests, Dr. Prasotia ji, Principal Government College, Rampur, Dr. Purna Mehta ji, Principal, Saraswati Nagar, Dr. Vijay Chauhan ji, Yes Gondwar ji, Professor P.S. Negi ji, and Dr. Negi, and dignitaries, keynote speakers, esteemed delegates, scholarly participants, District Administration of Kinnaur, ITDP Department, PTA Executive, and military different committees constituted for this conference, NCC cadets, NSS volunteers, public of District Kinnaur, technical support staff, and cameraman, Mr. Daud Negi, I, Janak Negi, Dean of Students Welfare, on behalf of principal, staff, CSA, and students, extend a heartfelt gratitude to all of you for your kind presence and gracing this occasion. I thank you for your kind cooperation, support, patience, and enthusiasm, contributing to the success and smooth conduct of this international conference. Once again, I thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Professor Janak Negi sir. मैं आपका होस्ट डॉक्टर ज्ञान शर्मा आप सभी महानुभावों का आचार्य राजकीय महाविद्यालय रिकोंग और डॉक्टर उत्तम सिंह चौहान जी की ओर से का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो आपने अपना भरपूर सहयोग और योगदान दिया है, जिसके फलस्वरूप ही ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कामयाब हो सका है। मैं आप सभी का हार्दिक आभार करता हूँ एक बार फिर से, और may I invite you for a sumptuous lunch after the national anthem. आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लंच कॉलेज कैंपस में है, सभी मेहमानों से पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि वो कॉलेज परिसर में चल करके लंच ग्रहण करेंगे राष्ट्रीय गान। हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे,
गाहे सब जय गाथा गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 बहुत बहुत धन्यवाद। बस खत्म।